Okay, first of all, before more people join and discussion becomes a little more interesting, let me talk about what happens on TV. Okay, first of all, very few registered RA, SEBI registered RA or RIA are there in India. Hardly 900, 1200, that kind of numbers I'm hearing. बहुत कम लोग हैं. Okay, it's not difficult to track them, and many of them regularly come on TV. Okay, and nowadays TV anchors. See how the game has shifted. First, let me tell you that TV anchors or TV personalities were doing a very poor job of communicating whatever they wanted to communicate on social media. They were not succeeding on social media. If you go to any of the TV anchors or any of the TV personalities, you'll be surprised to see their followers. They have not invested their time or energy on social media. Whether it is YouTube, very hardly one or two of them have done it. Whether it is YouTube or whether it is Twitter, they are not engaging with their followers. They are condescending. मतलब वो आपको नीचा दिखाते हैं, वो आपको ठीक से बताते नहीं है. They have a very small coterie of friends, WhatsApp groups. They will be communicating there. They are not communicating with larger audience mostly, and that is the reason they have lesser followers. Some of the bigger handles which are there on social media, on Telegram or on Twitter, which have grown rapidly in last 1 year, 2 year. It is not by just by chance. If you go and see, I'm not commenting on the content, but they are constantly engaging with their followers. They are giving updates. Whether the update is worth it or not, it is the judgment of the follower. But they are putting a lot of energy. They are putting a lot of effort in in engaging their followers in that media. Okay, which TV personalities have failed to do. If you look at last 2 years, you look at any anchor and look at his Twitter handle or your YouTube handle, they have not engaged with the followers. Okay, and it reached to a level where and I believe, I mean, half of my podcasts are on the topic of psychology. So you would believe me when I'm saying jealousy is a very strong human emotion. Okay, social media somewhere has taken away traditional TV in all senses. We are consuming more YouTube content. We are not consuming, those Tata Sky or any particular TV channel. We are not bound by Star Movies now or Star News now or Aaj Tak. We can go on YouTube, or we can see the latest news on Twitter. They are feeling left out. Okay, so normally what happens around the world when you're feeling left out, you try to pull down the person ahead of you. That's what these guys are doing. Why I'm saying these guys are doing, and everybody pretends that it's a very noble intention. They are saying, okay, fake MTM. They're saying that people who are not SEBI registered, they are broadcasting on Telegram. People who are not qualified, they are broadcasting on YouTube, or they are giving advice on YouTube, and so on. Okay, so there are two very basic hole in their argument. First is that in last 20 years they have hosted so many SEBI registered and analysts and advisors, right? Have they kept an audit trail of that? Today and I see TV all day. It's part of my job. Okay, it's there in my dealing room. So today only there must have been at least a 20 SEBI registered guys coming on TV, sell Astral, buy Voltas, or buy BHEL and sell BEL, some random advice. It's job of the TV channel to maintain an audit trail, right? How good the analyst is, that is what they are demanding from social media, right? How good a particular analyst is who is coming on TV and telling you to buy Voltas. What is his track record? Is the advice worth it? I mean, they should first
give an audit trail of the advisor who is coming on. Advisor is just said, okay, as a disclaimer, consult your financial advisor before trading a trade. And these are all short term trades, these are intraday trades, these are BTST. So every retail trader has a financial advisor sitting. हाँ भैया मेरे को टीवी में ये पता चला, अभी तुम बताओ मेरे को बाय करना है कि सेल करना है. That kind of mockery they are doing to you. Okay, this is what TV does. Ideally, against every analyst who appears on TV, there should be a track record that, okay, December month they gave 15 calls. This particular analyst XYZ gave 15 calls. 7 were correct or 10 were correct, 5 were wrong. If you would have taken equal trade on each, these many points you would have made, or this much of money you would have made in percentage. Right? That is the first check which is not happening, and it is consciously not happening. That they are calling SEBI registered advisors, and those advisors are just giving random calls on TV. Those calls are not being audited. A TV has a crores of budget. It's their core job. They can maintain, okay, this advisor came on my channel in last 3 months 17 times. He gave 50 calls, buy this, sell that, and this is the result. It should be published against the name and the photo, right? Then only the TV will become more credible. They won't do that because then nobody will appear with them. That's my point number one. Before showing it to social media, TV should be, careful enough what they have done in last 20 years. How much of retail has been misguided because of watching TV and following those tips. I don't know how many of you would have followed, when you were new, you would have followed tips given on TV, okay, and took that trade because the anchor looks credible, or the analyst appears every day on TV, every second day on TV, and then you think ये बंदा रोज टीवी पे आता है तो बड़ा आदमी होगा, और अगर ये बड़ा आदमी है बोल रहा है तो मेरे को वोल्टास खरीद लेना चाहिए, मेरे को BHEL खरीद लेना चाहिए, right? There's a target, there's a stop loss. The trade has a life of hardly 3-4 hours. There is no audit trail of those trades. And most of the channels, they don't put it on YouTube also. That okay, today this was the during market hour, these were the calls given. You go to YouTube, पिछले 1 महीने का 2 महीने का उठा के देखो. It's not a difficult job to do the audit of these analysts. Okay, that's my point number one against TV. TV guys are speaking, shrilling through their voice, on the top of their voice, that ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है. सोशल मीडिया में इसने 5,000 कमा लिया, इसने 10,000 कमा लिया, right? What TV itself is doing, a bigger medium, a bigger platform for so many years it is there. How much of real education they have done? I hope you are getting what my first point is. That the most basic thing that they need to do is audit every guest who is appearing on your channel, especially if it is giving a trade call. If he is giving you a investing call, fair enough. But most of the TV channels I have watched, they try to target the trading audience, because investor by design doesn't watch too much of TV. Okay, traders, they want to know what is happening and so on, right? That's my point number one. Point number two, which recently happened with one of the number one channels in India, owned by number one family in India, front running. So what most of you are very interested, what is happening in a girl trader's life, where she is located, and what kind of nail polish she is putting while putting a DP, or whether she is a fraud or not fraud, or semi fraud, or earlier fraud and not now fraud. But do you know that one of the top analysts coming at 9 o'clock, financial news, was fined by SEBI? The entire case is there on Wikipedia. It is there on SEBI's website. How many of you know it? It was a case of front running. So भाई साहब करते क्या थे? Not only the guest who is coming is giving a garbage advice. भाई साहब एक रात पहले ही खरीद के रख लेते थे. The gentleman used to buy the stock one day before. And next day morning में, okay, go and buy Voltas. He has already bought Voltas one day before, and next day when prime time TV you see buy Voltas, and the fundamental guy is saying इस बार ठंडी बहुत पड़ने वाली है, फ्रिज की बहुत जरूरत पड़ेगी और AC का बहुत जरूरत पड़ेगा, some kind of garbage logic. Then Voltas is also inching up. Then the technical guy comes, okay, this is a breakout, this is this, and you buy.
He kept on doing that, stock on stock, day on day, month on month. SEBI tracked him down. So he is there in Mumbai, and his account was wife and mother-in-law, I think, or mother and wife-in-law, some shady account was being operated from a location which was 400 kilometers away, and he was taking exact same calls, but much before broadcasting it on TV. And many of you might be knowing the name. And in finance, so he was debarred from the SEBI. He was fined few crore rupees, and very quietly he went away from Twitter space. He was asked to resign from the financial channel. It was a Hindi channel. Okay, same channel which is trying to save retail for last 3-4 days. Same channel. Okay, and then in finance, I have spent more than 15 years in finance and spoken to thousands of people. I can tell you one thing holds true apart from many other axioms: there is never a single cockroach in the kitchen. If you're reading a balance sheet, you see something wrong, grossly inappropriate or a kind of a fraud in 1 year, it will be there in preceding year, it will be there 3 years back. If you see one analyst doing it, he was just unlucky, he got caught. Okay, so you can safely assume that there are many analysts who are doing the same thing. Okay, so these are my 2 points about TV. One is they don't audit their guest, which they should do. Okay, they have much greater wherewithal than a random guy sitting in his mother's basement and running a Telegram channel of 1,000 people trying to earn some living. उसका कोरोना के टाइम से हालत पतला है, ठीक है, ट्रेडर है नहीं है क्या है, but why don't we catch the bigger fish? Right. So this was my first point, and second point is they do rampant front running. In India, the implementation of laws are so weak, and SEBI does not have punitive criminal powers yet. It has financial power. It can give you penalty and all, but it cannot put you in jail. Had it been US, things would have been different. So blatantly, most of the anchors do this front running. You should go and read that case. You ask around, many of you would be knowing who was the anchor, what was the case, and so on. Be more aware before you start trolling some random guy who is helpless or some random girl who is helpless. Okay, save yourself, save your friends from the bigger fish which is eating you every day. So these are my 2 points about TV. Okay, second is that when gold rush happens, there's a saying, when the gold rush happens, then people who are searching for gold, they don't make money. People who are selling kulhadi to dig gold, they're selling shovels, they earn money. So everybody is chasing fake MTM, fake MTM, fake MTM. So people who are selling the methods to verify MTM, they are going to make money. Okay, I already see 3 people who are willing to certify, and then very soon there'll be 10 certification agencies, just like ISI, Eggmark, BIS, CE certified, then US FDA. There'll be many certification agencies who will be certifying your MTMs. Then वहां पे क्या मिलावट हो रहा है? Who is going to check that? That I leave it to you. Okay, so putting so much of onus on being true to the MTM, whether the MTM is true or not, that should not be the single point agenda of your existence on Twitter. I see, ठीक है, whoever is giving verified MTM, fair and simple, you go comment them. But people who are not giving, right? Maybe they have their own reasons. Why are you going after their life, right? Maybe they understand a bigger picture. Okay, now many of you would think and say that ये देखो fraudster आ गया, ठीक है? ये तो आनंदेबल तो बहुत बड़ा fraudster है, तो अभी ये बोलना शुरू कर दिया. So I went on one of the MTM verification site, and it wanted my Twitter credentials apart from my broker credentials. Okay. I mean, whether my MTM is fake or I don't know. Many big traders, they are zero in common sense. They don't realize that. Whether my MTM is fake or genuine, okay, that I leave for you to decide. But I will never share my Twitter credentials with anyone, any third party. Why would I? Why do you need my Twitter? I mean, it is beyond me.
if you want to link my account to Twitter, you can send me a DM of a unique code in my Twitter DM. Okay, let me input that unique ID on your website, so my account is linked. No, but you want my Twitter credentials, full and simple, right? Plus, you want my broker credentials. I always say in many of my podcasts that the next financial scam is yet to happen. Acha, we know Carvi happened, so broker misused the funds. Broker misused your shares which were not pledged, forcefully it pledged, and then now that loophole has been plugged. So this thing happened. The Parik scam happened because some pledging. NACL scam happened, again some pledging issue, right? Harshad Mehta scam happened, we have plugged it. But every time in last 30 years, a new scam has occurred and it has left all the people bewildered. How could this happen? And how could we not look at this loophole? Okay, so I don't know how comfortable you are sharing your broker ka details plus your Twitter ka details. You are authorizing a third party to access your Twitter. I would love your civil discussion on this. How you have to be so mad about proving to people, to random strangers, that your PNL is genuine, that you will give your Twitter credentials, and it is not needed, because if I want to link my whatever detail, some random detail on a third party website to my Twitter, that website can throw a DM on my Twitter, and I can fill that DM just like OTP. I can fill that DM, and the two are linked without me sharing my Twitter credentials. Me sharing my Twitter ka, giving my access right of my Twitter. Right. I mean, I am to not even comfortable giving my broker rights. I don't know whether many of you know that a lot of DMATs were hacked like 2 months back. I will not name the broker, one of the top brokers of India. A lot of DMATs were hacked. Some were hacked because of OTP was shared. Some were hacked because the email where the password reset link goes, that email was hacked. It was Rediff. They say tomorrow it can be anything else. Okay. So and this is what, when it happened, then everybody came to know about it. Okay, that Rediff is not safe, and then without you giving your OTP or your credential, your account can be hacked. And what exactly happened in the account? This scam was so big that they took a trade in your account. Let's say I remember Coal India trade. So the real value, next month, January month or February month, those options are very liquid for stocks. So let's say ATM option, the real value should be, as per Black Scholes or as per their calculation, should be 103 rupees. They made you sell at 0.75 or 1 rupee, because your account for just for 3-4 hours is in their chungal, is in their hands. They can make any trade. Now normally such a trade will not happen because there is no other counterparty, but they themselves were there as a, when you are selling at 1 rupee, they themselves were a buyer at 1 rupee, exactly same strike, exactly same stock, exactly same month. Few crore rupees were lost. In individual account, 40 lakhs, 50 lakh, 1 crore was lost. Okay, so it is not a game. This is not a high school club where to prove it to somebody, you will share your password, you'll share your DMAT, you'll share your Twitter. Come out of that game if you are here to make serious money. Just wake yourself fuck up, right? I mean, I see a lot of you playing with 1 crore, 2 crore, 5 crore, 10 crore, even 30 lakh, 50 lakh. Let's say you are working in a very good job. How many of you are able to save from the job 10-15 lakh rupees per year? Very few of you. It will take a decade to earn that much money. What your papa have given or what you have borrowed from somebody. Maybe you are a very good, competent trader, but what if you lose that in a scam? Okay.
So don't play these games. If you feel very uncomfortable, ये fraud है, ये non fraud है, ये semi fraud है, ये half boiled fraud है, just stay away from the game. Because ultimately you'll be affected. Ultimately they'll come after you, they'll challenge you, and you'll be forced to give up what you should not give. Okay. If you think somebody is fraud, just unfollow, mute, block, khatam. Lot of people think I am fraud. Please go ahead, block me, mute me, whatever. But don't be in such a heated situation where you have to share your password. Because if you want my verified PNL, I want your verified PNL. Then you, in a heat of the moment, you'll say, "ये है रहा मेरा Zerodha का password, ये रहा मेरा Twitter का password, ले लो." And the guy who looks trusted today is the scamster of tomorrow. Okay. To give you perspective, ILFS scam happened. I work in a financial institution. I used to work very closely with ILFS. Before Satyam happened, I exactly remember it happened during market days and stock fell to 5 rupees. From I think 120 rupees started falling and it fell to 5-6 rupees. Ramalingan Raju or Satyam, he had won 23 awards of good governance, best CEO, Lesun and Adrak, all kind of award he had won just previously. And nobody could have seen it because he had 23 banks and he had forged the account statement of each bank with the ink, with the font, with everything. A running printer was there at his office, which used to just cook books, slow cook to boil. And at that point of time, I was, as Satyam used to be my customer, I used to Satyam, and some of the lower level staff told me that they have not cleared taxi bills, for their software engineers. They used to keep a lot of taxis, like thousands of taxis, to best of the software engineers to bring them home, to bring them to office, and they had not cleared taxi bills for 9 months. Someone who is having thousands of crore in the banks, why is he not paying taxi bills? Very, very odd for a software company where other software companies were very prompt. Now, in hindsight, we know ऐसा भी scam होता है. ओहो, scam ऐसा होता है. So next scam is ये कोई छोटा मोटा कोई किसी ने Telegram group खोल लिया who is not trying to scam you, who is trying to educate to someone, who is trying to fraud someone, is not a scam happening to you. A scam which will happen to you will affect you. Satyam was a scam, it affected the entire ecosystem. ILFS was the scam, it affected the entire ecosystem, right? So that's my limited point. If you want to add to anything, as I said, my humble request and very serious request, we are not going to take any names this way or that way. If you are a fanboy of someone, don't take name. If you hate someone, don't take name. Here I am discussing ideas with you. Okay, I have not taken any names. If you want to discuss a counter idea, you're most welcome. Take the mic, say things you want to say, right? And one at a time. So idea of this prompto broadcast, because I see a lot of well-meaning people getting embroiled into it where they are just not, take the bigger fish, na. That's what I'm saying. Why don't you take on the TV, which is giving like 200, 300 random calls a day without any audit trail, right? आज ये बाई कर लो, कल ये सेल कर दो, कल ये बाई कर लो. 3 महीने में क्या कॉल दिया उसका भी तो ऑडिट दिखाओ ना. That is what you are demanding from Telegram people, right? Those young boys or young girls who are giving non-stop calls on Telegram, you are asking कि आपका कितना calls अगर सही गया तो बहुत अच्छी बात है, right? Everyone will join the Telegram. गलत गया, that is what you are objecting, or maybe you are guessing, or you are trying to pile on them, right? So do it for TV first. Do it to all. ज़्यादा है भी नहीं, 900 आ रहे हैं पूरे कंट्री में. It is such a tough task to become an RA. आप वो लोग को जाके पूछो. Lot of people are RA who are there on Twitter. They don't have much following because एनर्जी लगता है फॉलोअर को एड्रेस करने में, उनको समझाने में, उनको it takes your time and energy. Plus you have to be respectful to all of them. Lot of TV anchors I see, lot of RAs I see, they are using Twitter as their WhatsApp का group. आपस में बात कर रहे हैं. Are they addressing the guy who has just opened the Demat account 3 months back, 6 months back, telling the most basic concept? Very few of them are doing. Okay, and ये हर एक मार्केट में होता है. इंडिया में तो बहुत टाइम से होता है कि हर मार्केट में एक लाइसेंस छोड़ दो. You can't manufacture this because you don't have the license.
You can't manufacture that because you don't have the license. In Bombay, even if you have a car, you are jobless, you can't run it as a taxi because medallion is required, taxi ka batch number is required. वो दो फिएट टैक्सी आ जाती 25,000 रुपए में, बट दैट टैक्सी का बैच नंबर comes 2,50,000 rupees ka. There's a cumbersome process and limited number of taxis. Okay, so it doesn't help the commuters as well. It doesn't help the other drivers who want to be taxi drivers. License doesn't help anyone. Okay, and I have given you enough example of that. All across the world it happened, right? So I'm not saying any kind of license should not be there, but I'm saying before you single-minded devotion, you start targeting people who are vulnerable, people who have just they don't know much of the law, they don't know much of the social media. Target the bigger fish. Make a group, make a union, and target the TV guys. There today, one of the prime channel I was watching. I watch TV every day. Many of you know. I have some 200 calls. वोल्टास खरीद लो, BHEL बेच दो, एस्ट्रल खरीद लो, ये कर दो, वो कर दो. करो उसका ऑडिट 5 दिन बाद कितना कॉल सही गया. Let's say if I put equal money on so nobody wants to take on the bigger gunda, right? On the bigger fraud. Everybody wants कि हाँ ये comfortable है, इसको परेशान करेगा तो बहुत रोएगा, इसको लेते, right? Don't do that. You will not feel good at the end of the thing. That's my limited point, guys. Yeah, killer. Hi, Anbai. You said right. No one wants to take on the bigger gunda. That reminds me of movies before a few years जहाँ पे विलन वो सब्जी वाला नहीं तो कोई स्टोर कीपर को मारता है बट हीरो को नहीं मारता basically. That's how it is. But we'll come back to that later. One thing I want to tell is that especially when it comes to TV calls or the so-called registered analyst and parts, compliance should be there, and it is there for a good reason. But ये जो भी लोग beat anyone, 99% people who tell that they are here to save retail, I am here to save you, is actually pissing on you and telling you that it is raining. Simple as that. Because everyone has their own vested interests, be it TV guy or anyone running a Telegram channel, and it is completely fine. If someone has a vested interest over there, it is completely fine. But it should not be misconstrued in such a way, it should not be projected in such a way that they are there for you, which is exactly what many or majorly on TV it happens. And now coming to the fact about verified PNL or verified MTM and all of that, as you said, Anand bhai, somewhere it is risky क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि Twitter credentials पूछ रहे हैं. I prefer to keep a bit of a low profile on social media, and it was displaying full name and everything. That's the reason I told that unless full name is removed, I'm not game for it because but the fact that the app is asking for Twitter credentials, I'm not comfortable putting any of my credentials in a place where it should not be because kalke then I can't say who basically takes access. It has happened a lot of times in a lot of situations essentially. And that being said, in as instead of just singularly focusing, I do agree that to an extent from where people are coming when they are targeting a particular person, I do when I read the comments to an extent, yeah, it makes sense, but it's that just don't blindly target anyone and everyone. Some people could be fraud, some people could be genuine, but it doesn't mean that you start single targeting each and every person who's running some or the other service here. Because ultimately इससे आपको क्या benefit मिलने वाला है apart from entertainment. And if you are on Twitter for entertainment, then there are other places where you will get better entertainment than Twitter. That's it. Amit, you can speak now. You don't need to wait for your turn. Just बोलिए. No, no. Sometimes I get audio issue. Anand,
Yeah, Okay, you are fair enough. audible. So one thing is very clear: we are not here to make friends or enemies. We are in market for one single purpose, and that is to make money. And in that process, if we share something like our study, so like this, Killer Trader shares his order flow, I share my charts. So that helps us. At least that helps me to audit myself. And I'm not here to save anybody. To be very frank, I am here for a single purpose, that is to make money. उस प्रोसेस में कोई फ्रेंड बन गया अच्छी चीज है, उस प्रोसेस में कोई दुश्मन बन गया अपने कोई फर्क नहीं पड़ना. लास्ट में देखो पैसा आपका है, ट्रेड आपका है. आपको लगता है कोई आपको बचाने आएगा तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो. हम अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो हमें आंखों से दिख रहा है सामने वो शेयर कर सकते हैं. कमिंग टू व्हाट आनंद वाज सेइंग, यार आप टीवी में मतलब हर 5 मिनट में ना कोई बाय देगा कोई सेल देगा, आप कैसे जज करोगे कि आपको क्या करना है? तो इसके लिए सारे टीवी भी देखना बंद करो. न्यूज़पेपर में जो आता है कि आज ये खरीद लो आज वो बेच दो, तो उनका भी कहाँ कोई ऑडिट करता है? Amit bhai, मैं वो नहीं कर रहा हूँ what a retail should do. What I'm saying, TV is the biggest Absolutely, fraud absolutely, which nobody is talking absolutely. about, right? They don't have any right to give 500 calls during the day without any audit trail, right? And we should call out to यस them. एब्सोल्युटली. आप अब देखो ना, एक चैनल बोलेगा निफ्टी लॉन्ग कर लो, एक बोलेगा शॉर्ट करो, आप क्या करोगे? अरे आप खुद अपना स्टडी करो ना, क्यों किसी के भरोसे बैठे हो? और इग्नोर करना शुरू करो टीवी को. उनका काम है सिर्फ न्यूज बताना कि भैया क्या पे क्या हो रहा है. वह तो बैठ जाएंगे 2:30 से लेके 3 बजे तक 50 स्टॉक 100 स्टॉक दे देंगे. अब आप कौन सा रैंडमली पिक करोगे बताओ ना? आपके पास कोई प्रोसेस है उसमें से किसी एक स्टॉक को भी पिक करने का? उनका काम होना चाहिए इन्फॉर्मेशन पास करने का. वो इन्फॉर्मेशन तो कम पास कर रहे हैं और टिप्स ज्यादा दे रहे हैं. खरीद लो बेच दो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. अरे यार 500 बार तो तुम्हारे ट्रेड रॉन्ग जाते हैं. उसमें तुम आके कभी बोलते नहीं हो कि सर मेरा चल गया, मेरा स्टॉप लॉस टिक गया था, मेरा स्टॉप लॉस कट गया था. आगे वो बोलने का तो है नहीं, बट आके सब वही चीज करेंगे. तो ये सारी चीजें जब तक आप खुद इग्नोर नहीं करना शुरू करोगे ना कि ये एक्स ने ये बोल दिया, वाई ने वो बोल दिया, कोई आपको नहीं बचाने वाला. और सबसे बड़ा स्कैम ही टीवी है. सच बोलते हैं आनंद भाई, स्कैम टीवी से बड़ा कोई स्कैम नहीं है. जब जो जितनी मर्जी ट्रेड दे दो, कुछ भी न्यूज चला देंगे ना, पब्लिक चढ़ जाएगी उस पर. फिर बाद में आके डिनाई भी कर देंगे कि ऐसा हमारे तो रूमर था, सोर्स बेस था. अगर मैं सोर्स बेस कुछ लिख दूं ट्विटर पर तो लोग सेबी को टैग कर देंगे कि भैया ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, इसके पास इन्फॉर्मेशन है. सेबी तो व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक करती थी बीच में, जब ये केसेस चलना शुरू हुए थे फ्रंट रनिंग वगैरह के, तो उसमें वो भी चेक करना शुरू हुआ. तो जब तक वो खुद ऑडिट खुद की तो करवाते नहीं है, पंचायत आके दूसरों की कर देंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है. अरे तुम गंद तो तुमने स्टार्ट करी ना, 20 साल हो गए आज टीवी पर आते आते, गंद मचा रखी है. रिटेल को सबसे ज्यादा फंसाते वो लोग और कोई नहीं फंसाता है. वो आके सुबह 20 स्टॉक एक देगा, 20 स्टॉक दूसरा देगा, 20 के पता नहीं 100 स्टॉक तो हो जाएंगे. अब 100 में से रैंडमली आप कौन सा चूज करोगे बताओ? कोई तो तरीका होना चाहिए उस चीज का. तो टीवी देखना बंद करो, बेस्ट चीज है. वो सबसे बड़ा स्कैम है. कैरी ऑन आनंद भाई. दूसरा चीज मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट ओनली अमंग द ट्रेडिंग कम्युनिटी, you look at any wider community, it is a latest trend where when people are spending more and more time online, that whoever we don't like, whoever we don't agree with, whoever we don't gel with, is a fraud, is a scamster, and has to be cancelled out. Okay. That is, you look at Joe Rogan episode, right? Joe Rogan has done so many, like he's doing YouTube videos for 10 years. Then he did a deal with Spotify of $100 million. He just interviews people. He gives platform to everybody. He gave platform to Bernie Sanders also. He gave platform to Elon Musk twice. He gives platform to right wing, to left wing, to economists. During Corona, people who wanted to debunk the myth, or wanted to talk against vaccine, he gave platform to everyone. Just because some people did not like Joe Rogan, they formed a mob and they started, making a chorus of cancel Joe Rogan. A lot of musicians, a lot of artists, they themselves resigned from the platform of Spotify. कि इसको बाहर निकालो. That kind of trend I'm seeing on Twitter for trading people. Okay, you don't like one particular guy or a girl, you don't have the right to form a mob and constantly harass him or her, that forcing that person to behave in a certain way. That's simply, like, to say the least, it's foolish. And people who are just cheerleading, they are the fodder.
My only question, Anand bhai, is that see the whole idea behind verified sensible is all very good. I mean, being a mentor myself, yes, surely it will help me, get more business and all of that. I totally agree. It is a win-win for both the traders and also people who are running any kind of additional services in the markets. But again, my only question is how can that be, or who exactly made that particular verified MTM as a standard benchmark by which a trader's authenticity has to be judged? I mean, it is like saying that if you don't wear a Tommy pant, you are not wearing a pant at all, basically. Abhishek, my question is to both of you: why one should share his MTM? अनिल अंबानी क्या सॉरी मुकेश अंबानी अडानी कभी आके शाम को ये तो स्क्रीनशॉट पोस्ट नहीं करते कि आज हमने अपने स्टोर में 5 लाख किलो गेहूं बेच दिया या आज मेरे स्टोर ने 10 लाख रुपए बना दिए. वो तो कभी आके प्रमोट नहीं करते खुद को ऐसे. तो व्हाई अ ट्रेडर शुड गो एंड प्रमोट हिज एमटीएम स्क्रीन जस्ट टू सेल समथिंग? अगर आपका नॉलेज होगा तो लोग अपने आप आ देखो जाएंगे. अमित, मेरा माय व्यू इज अबाउट द एमटीएम, both genuine and the fake. I'll tell you both. Okay, see, first of all, if someone wants to do something and if I don't like it, okay, maybe I'll talk about it. But beyond that, I'll just mute the person, I'll unfollow the person, probably I'll block the person. A lot of people have blocked me. Okay, why people show MTM? You would go to Instagram, maybe you're not very familiar with Instagram, or maybe you are. People put their holiday pictures. मैं इटली गया, मैं फ्रांस गया. Why do they need to tell strangers? That's a deeper question. But people are doing across genre. Okay, people are putting their cooking videos. People are putting their new house that they have constructed. One of my friend is a builder, okay, in a small city, and he keeps putting of buildings which he has finished. So people are putting all kinds of achievements. Okay, now recently there was an episode done on YouTube. Somebody tried to collate it. A lot of people during corona time, or maybe just before corona time, they couldn't take vacations, maybe they were laid off. They went to studio and they recreated vacation pictures as if they are in France, they are near Eiffel Tower and so on. So fake MTM, I'm addressing that. Maybe the person has some kind of need, maybe the person is psychologically depressed, maybe it is a high part of his day that putting a fake MTM of 1 crore and 3,000 likes he is getting, maybe that's his drug. Who are we to judge? Okay, बाइबल में लिखा है ना, don't judge lest you be judged, right? If I am judging someone कि इसने कैसे कपड़े पहने, tomorrow people will judge me as well, right? So yes, if I think that it's wrong, I'll not look at it, I'll not like it, I'll not retweet it. That's my limited point one. The point number two is, you go and put a thread on trading psychology, and put a thread on something related to trading. You'll get 100 200 likes. You put an MTM of 70 lakhs on expiry day, you'll get probably 4,000 likes. Okay, so now the question is very similar to, हम ऐसा पिक्चर क्यों बनाते हैं जिसमें बहुत वल्गैरिटी रहती है, गोविंदा वाला डांस रहता है, रेप सीन रहता है? वो जो पिक्चर बना रहा है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर का भी देखना है, उसको अपना प्रोड्यूसर का भी देखना है, उसको डायरेक्शन भी देखना है, उसको ही हैज टू मेक श्योर मूवी चलनी भी चाहिए. ओके, नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी दिशा, बहुत कम लोगों ने देखी होगी. मैंने देखी थी. आई वाज अ किड, आई वाज शेकन बाय द मूवी. दैट वाज एन आर्ट मूवी. तो आप बहुत अच्छी मूवी बनाओगे, उसको देखने वाले कितने लोग हैं? ट्विटर पे अगर आज मैं अपना डीपी हटा के एक अच्छा खूबसूरत लड़की का डीपी लगा दूं, मेरे 1000 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. ओके, सो यू कैन से ओके आनंद भाई, यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट अ गर्ल, यू हैव पुट अ गर्ल्स डीपी, राइट, यू आर अ फ्रॉड. बट मार्केट में वही बिक रहा है ना, तो लोग वही बेच रहे हैं, राइट? So please, let's not blame one party only. The market, the entire swimming pool is like that. That people are pretending who they are not. They themselves probably have to answer it later on to themselves when they look at it in the mirror. But we are no one to hound them and to chase them and to literally harass them. That's not a good behavior on our part. That's my point. It's it's not just the people who are pretending to be someone they are not, but even in general देखे तो जैसा आप बोल रहे हैं आनंद भाई, एक 10 ट्वीट का थ्रेड बनाओ कोई अच्छे टॉपिक पे, उस पे जो एंगेजमेंट आता है ना, कंपेयर टू वन एमटीएम स्क्रीनशॉट, it is literally 30% of the traction that one MTM screenshot gets. So it's somewhere, this is what people want. Forget all of that. Now let us say recently a handle came to light who was
making some ridiculous claims about trading, and जो एकदम जब market strong down trend में था, then he was making a lot of people, buy and hold calls and whatnot. Okay, and when the handle came to limelight, the handle had around what 16-17 thousand followers, and उस handle को 10 दिन 10 लोग गाली देना स्टार्ट किए. Within 10-15 days, the follower count jumped to 32-33 thousand. So don't you think people are craving excitement? People are craving engagement Nobody wants to learn. here. I'm telling you, nobody wants to learn. People Nobody wa- wants to. People are just craving for, it's like a reality TV. They are craving for आज ये एक्टर ने क्या किया, कल वो उसने क्या बोला, कल इसको किसने गाली दी, कौन किससे बात नहीं कर रहा है. For them, it's just a gossip column. So let's not only blame the actors itself, right? That's what I'm the trying to act convey. the And actors it has will gone beyond to a level where we are getting really, really personal. I saw a girl's pin code and home address number being taken, and her income tax return being taken out, and saying that 3 years back she was making 4 lakhs and stuff like that. I mean, what are we becoming in the process? We are trying to unhide scamsters and so on, but हम क्या बन रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं, खुद में सोचो. Like everybody must be having a girl relative or a family, uh, like is it maybe the person is fraud or not fraud, I don't know, but what about the mental state of the person, right? At least and I have been, some of you might be thinking that I am fraud, which is a fair judgment. You should always be guarded and cautious about who you see on social media and how people behave. But when I have been trolled, sometimes I have been really depressed about why people are thinking like that, why people are saying like that. Okay, so that's my limited point, that who are we to judge? exactly, and it's usually what the performance that the actors put on. It is what is demand in public now. Now, like you said, some people are getting really personal and really trolling someone. It's not a one-sided show. Sure, if you think that you've been scammed, why did you let that happen? Is my question. In some cases, it is extremely bloody ridiculous. जहाँ पे कोई बोल रहा है कि आपके पास 15,000 कैपिटल है तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए काफी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, आप मुझे 2,000 रुपए टिप्स के लिए पे करो एवरी मंथ, आई विल मेक यू प्रॉफिटेबल, एंड द गाय blows up his capital 30,000, 50,000, 70,000 capital. My only question is, what guided you to take such a decision? And that is purely your greed. And because you feel that in such a situation you were unrealistic, you were living in your own lala land and you got scammed, आप उसका frustration भी ट्विटर पे चैनल कर रहे हो सब पे basically. I mean, what exactly motivated you to take such a decision with respect to your trading? That should be question one. एक तो ट्रेडर खुद अपने थोड़े लोग अपने लाला लैंड में रहते हैं. They will only follow those people. They will only like those posts which conform to their own, let us say, preconceived notions about success in the market. Whether it is practical or impractical, it doesn't matter. कोई बोलेगा अगर आके कि आप 50,000 रुपए से मैं ऑप्शन राइट कर सकते हो एवरी डे, सम गाय लिटरली पोस्टेड दैट एंड दैट पोस्ट गॉट ऑलमोस्ट 2,000-3,000 लाइक्स वहां पे. इट्स नॉट प्रैक्टिकल, यू नो दैट, आई नो दैट, बट because people want it to be true is the reason why they are getting that kind of engagement wahan pe. So it's mistake on both sides. Yeah, आनंद भाई, सूर्या हियर. सो दो चीजें हैं. एक, अभी जो ट्विटर पे पूरा चल रहा है एमटीएम स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है, वो बटरफ्लाई इफेक्ट है. कि इतने साल जो लोगों ने सिर्फ अपने एमटीएम्स दिखाए हैं, कहीं पर भी प्रोसेस वाइज या ट्रेडिंग कैसे करते नहीं दिखाया, उसका लोगों ने भड़ास निकाला है. सबसे नहीं सूर्या, मेरी बात पूरी मैं अच्छा, पूरा करना चाहता हूँ. नंबर 2 पॉइंट, मेरे हिसाब से प्रोसेस क्या होता है कि आप सोचो कि एक ट्रेड लेते हो, आप अपना इनिशियल स्टॉप लॉस दिखाते हो, फिर दिन में जैसे जैसे चलता रहता है आप अपना ट्रेलिंग चलाते रहते हो, और एंड ऑफ द डे आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया या परफॉर्मेंस हो गया ये दिखाते हो. अपनी क्वांटिटी नहीं, कितना पैसा छापा ये नहीं, एक लॉट में तुमने कितना छापा ये मैटर करता है. अगर हम ये चीज क्लियरली दिखा सके किसी को भी, मतलब आप अपने ऑडियंस को दिखाओ या आप अपने ट्विटर पे दिखाओ, ये प्रोसेस क्लियरली दिखा सके ना,
तो एक धीरे धीरे जो भड़ास आई है ना, वो नहीं आ सकती थी। तो मेरे हिसाब से तो जो आ रहा है, ठीक है, वो इसी के लिए आ रहा है कि स्टार्टिंग से बेंचमार्क सही से सेट नहीं किया है। मैं ट्विटर पे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, मैंने आज तक किसी से भी एक रिस्क टू रिवॉर्ड रिलेटेड ट्रेड कभी नहीं देखा है। जो भी देखा है वो लेस देन 1:2 का देखा है, जो अगेन मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, लोग बोल सकते हैं कि भाई इसका सक्सेस रेट ज्यादा है इसलिए हम 1:1 ले लेते हैं, जो भी होता है, बट ये चीज सही नहीं है। और कहीं पर भी क्वांटिटी दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, लेकिन पर ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं दिखाते। और जब मैं पूछने गया कि भाई तुम लोग क्यों नहीं दिखाते, तो बोलते हैं भाई हम लोग दिन में 500 ट्रेड छापते हैं, तेरे को क्या लगता है मैं तेरे को हर एक ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाएगा क्या? तो इस टाइप में मेरे हिसाब से तो प्रोसेस वाइज गलत बना रखा है। जिस दिन धीरे धीरे प्रोसेस सही होगा, जिस दिन हम लोग ये चीज सही करेंगे कि लोगों को बताए तुम्हारा इनिशियल रिस्क कितना था पर ट्रेड या पर लॉट, और तुमने एंड ऑफ डे में कितने ट्रेड्स लिए, एक एक का रिस्क रिवॉर्ड कैसे, जैसे कि हम लोग जनरल बनाते हैं, एक ट्रेड लिखा, हाँ उसका रिस्क रिवॉर्ड ये था, एंड ऑफ द डे मैंने ये इतना पैसा बनाया, दूसरा ट्रेड ये था। एक दिन के शायद आपके 50 भी ट्रेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक लाइन में लिख दोगे और एंड ऑफ डे में उसका एक एक का प्रूफ दिखा दोगे, तो ऑफ कोर्स आप सही प्रोसेस बना रहे हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अब बोल सकते हाँ देखो, अभी देखो मैं बता रहा हूँ, किलर ट्रेडर एक मिनट रुक जाओ, ये बहुत श्योर इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो देखो मैं तुम्हें देखो सूर्या भाई, पहले मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि किसी और की बात करें तो लोगों को बुरा भी लग सकता है, राइट। पहले मैं अपनी बात करता हूँ। तो जब मैं ट्विटर पे नया नया था, तो और वो मैंने ट्वीट्स अभी भी डिलीट नहीं किए, तो मैं मेरा एक पर्टिकुलर सेटअप था, उसकी मैं कितनी क्वांटिटी है, उसका कितना कब एंट्री ली, कब मैंने उसको सेल किया, उसमें क्या पीएनएल, वो मैं डेली डालता था एक थ्रेड के फॉर्म में। मेरा जो लोग बहुत पहले से फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे 2-3 हजार फॉलोअर्स थे, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज सूर्या भाई, इको आ रहा है। तो मैं अपना ओआरबी सिस्टम मेरा था, उसकी ट्रेड्स भी मैं डेली डालता था। वो मैंने बाद में ट्रेड्स करनी बंद कर दी फॉर सम अदर रीजन, ओके। वो मैं डेली डालता था। और इसके बाद मैंने ट्रेड्स अपनी जो 102 यूट्यूब के वीडियो बनाए, और उसमें मैं बताता था कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। और आई डोंट नो आपने कितने वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक यूट्यूब वीडियो अगर आप 10-12 मिनट का बना रहे हो, तो उसको एडिट करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, और उसको उसके बाद यूट्यूब में अपलोड करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। पूरा 3-4 घंटे का प्रोसेस हो जाता है, और मैं डेली बनाता था, ठीक है। आज बनाता था, कल बनाता था, जिस दिन मेरी तबीयत खराब होती थी उस दिन भी बनाता था, जिस दिन डिनर नहीं किया होता था उस दिन भी बनाता था, ठीक है। 102 बनाए। और मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, आप पता नहीं मुझे कितने दिन से फॉलो करते हो, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है वो भी मुझे कुछ ओ करती है। आज भी मैंने अपना स्पेसेस शुरू करने पे मैंने बोला है, स्क्रीनशॉट लो और रीट्वीट करो, लोगों को बताओ, राइट। मैं कोई हिडन एजेंडा एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया में नहीं रखता हूँ कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ इट आई वांट मोर रीच, राइट। और मैं यूट्यूब वीडियो के बाद भी बोलता था सब्सक्राइब करो, रीट्वीट करो, राइट। बहुत कम लोग करते थे। तो यही रीजन भी है कि मैंने बनाना बंद कर दिया, क्योंकि ऑडियंस बहुत थैंकलेस होती है, राइट। तो और मैंने ऐसा, अभी भी वो वीडियोस हैं, 102 कोई कम नंबर नहीं होता है। आप जाके कोई रैंडम वीडियो उठाओ, उस दिन देखो मार्केट में क्या हुआ था, अगले दिन क्या हुआ था। मुझे जो आता था नहीं आता था वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मेरे एफर्ट जो आप पूछ रहे हो वो मैंने पूरा बताया, ठीक है। अब आप मुझे पता नहीं कब से फॉलो कर रहे हो, मेरी बड़ी एलिफेंट मेमोरी मुझे याद रहती है। आपने आज तक मेरा एक भी ट्वीट रीट्वीट नहीं किया है। आपने लाइक किया हो तो मुझे याद नहीं, क्योंकि लाइक तो काफी आते हैं, एक भी नहीं किया, राइट। वाई डू आई ओ यू एनीथिंग? Why do I owe you a process? Why do I owe you my entry price? Why do I owe you my risk reward? Why do मैंने आपसे पैसे तो लिए नहीं है, राइट। मैं वो दिखाऊंगा, मैं वो करूंगा सोशल मीडिया पे जो मुझे अच्छा लगेगा, राइट। मैं आपके मन की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप मुझे ट्रोल करोगे, आप मुझे परेशान करोगे, आप मुझे हैरेस करोगे। इज दैट अ राइट अरेंजमेंट? मैंने आपसे पैसे तो लिए नहीं है, मैंने तो किसी से पैसे नहीं लिए। मान लो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कपड़े दिखाऊं, मैं अपनी डीपी दिखाऊं, मैं अपना एमटीएम दिखाऊं, मुझे जो अच्छा लगता है। टिल द टाइम आई हैव नॉट टेकन मनी फ्रॉम यू, टिल द टाइम देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, आई डोंट ओ यू एनीथिंग बॉस।
वो प्रोसेस, वो 1:2, वो ट्रेड बताओ, वो एंट्री बताओ, वो एग्जिट बताओ। क्यों बताऊं? मेरे कुछ 100-200 फॉलोअर्स हैं जो मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं। अगर मैं 2-4 दिन सोशल मीडिया पे ना आऊं तो मुझे पिंग करके पूछते हैं, सर क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या? मैंने तो 100 से ऊपर तो मैंने पॉडकास्ट किए हैं, डिप्रेशन के ऊपर किया है, ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो उसकी लत कैसे छुड़ाएं उसके ऊपर किया है। डॉक्टर श्रीनिवास जो एम्स के डॉक्टर है उनको बुला के किया है, राइट? मेरे फॉलोअर्स ने क्या किया है, उस रैंडम फॉलोअर्स ने जो आके पूछता है रिस्क रिवॉर्ड बताओ, आके पूछता है मेरा कैपिटल बताओ, व्हाट डू आई ओ? मैं तो बोलता हूँ लाइफ में यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन। बहुत लोग बोलते हैं कि यू शुड ओ टू योर टीचर। मैंने तो 20 साल मैंने आईआईटी जेईई के लिए भी पढ़ाया है। बहुत लोग बोलते हैं यू शुड ओ टू योर पेरेंट्स। अभी तो मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ। आई डोंट थिंक माई चिल्ड्रन विल ओ एनीथिंग टू मी। वट एवर आई एम डूइंग इज माई लव एंड माई ड्यूटी। मैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि बाद में वो मेरे लिए करेंगे। आई डोंट ओ एनीथिंग टू माई फॉलोअर एंड दैट टू अ रैंडम फॉलोअर। आप इस बात को समझ रहे हो? मैं आपके हिसाब से नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे परेशान करोगे। नहीं, मैं क्या बोलने वाला था, आपने जो बोला वो सही बात है। मैं आपका आज तक, आपका ही नहीं, मैंने किसी का भी बहुत कम, किलर ट्रेडर के साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे आए हैं, मैं मैंने आपको पढ़ा है। इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं, मैं एक रैंडम बता फॉलोअर रहा को हूँ, बोल रहा हूं। नोबडी मैं ओज एनीथिंग टू एनीवन ऑन ट्विटर, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू। नो वन ओज एनीथिंग टू एनीवन, and even if I make a loss or profit from something like you gave a call, definitely it is not yours, it is my responsibility to do it right. ठीक है? तो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको बगल रख देता हूँ, ठीक है? आपको दूसरे की तो साइड में बात कर रख नहीं देता सकता हूँ। ना, नहीं, आपको मेरी बात अरे लेनी सूर्य भाई, पड़ेगी, राइट? नहीं, क्योंकि सूर्य मैं भाई, भी नहीं बताता हूँ। जब आप पूछते हो कि ट्रेड का लॉजिक क्या था, मैं नहीं बताता हूँ। आप पूछते हो कि तुम्हारा कैपिटल कितना है, मैं 90% टाइम नहीं बताता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता यार। मैं एक नौकरी भी कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक बड़े कैपिटल से ट्रेड भी कर रहा हूँ। मैं दिन की 1000 ट्रेड फायर करता हूँ। फिर मैं सोशल मीडिया भी चला रहा हूँ, फिर लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 2 बच्चों को भी पाल रहा हूँ, राइट? उसके बाद मैं अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहा हूँ। व्हाट डू आई ओ यू यार? मैं नहीं रिप्लाई करूंगा, समझ भाई रहे हो? मत करो, सेम हाँ, चीज है, मत तो करो। आप हैरास नहीं करोगे ना? आप बोल रहे हो कि अरे आपका इनिशियल मैंने आर्गुमेंट क्या था? आपका इनिशियल आर्गुमेंट क्या था कि जो मेरे को ये सब नहीं देगा वो फ्रॉड है, उसको मैं हैरास करेगा। अरे मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला जो हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज राइट वो गलत प्रोसेस हुआ है ना, अपने। वही तो बोल रहा हूँ ना कि नोबडी ओज एनीथिंग टू यू। अगर अरे आपको मैं नहीं भी पसंद है वही वो बोल बंदा, रहा हूँ कि गलत हाँ हुआ है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, क्यों तो वो गलत गलत हुआ है। हुआ। हाँ हाँ, ठीक है, ये यू अग्री दैट सूर्य, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बराबर। किसी हाँ, को हरास करने का राइट नहीं है। अरे एंड वो मैं भी एग्री एग्जाम्पल, करता हूँ। सूर्या भाई, आई गिव यू एन एग्जांपल। आप बोल रहे थे कि मैंने बहुत सारे ट्वीट्स पोस्ट ट्रेडिंग माइंडसेट पे किया है एंड ट्रेडिंग प्रोसेस पे किया है। आई टेल यू समथिंग, एज एन इन्फ्लुएंसर, एनीवन हु कम्स टू ट्विटर और इंस्टाग्राम कहीं पे, व्हेन दे आर ट्वीटिंग समथिंग और पोस्टिंग समथिंग, उनको फीडबैक कैसे मिलता है लोगों से? थ्रू लाइक्स, राइट? When I saw that, मैं रोज शाम में आफ्टर मार्केट रिलीजियसली निफ्टी बैंक निफ्टी का एक ऑर्डर फ्लो स्नैपशॉट पोस्ट कर रहा हूँ। एवरी डे आई डिड दैट फॉर 3-4 वीक्स ऑलमोस्ट एवरी डे। एंड उस पे 1 या 2 लाइक्स आते हैं। एंड देन आई पोस्ट सम, आई रीट्वीट सम एंटरटेनिंग रीट्वीट और अबाउट समवन एल्स दैट केम इन द न्यूज और एनीथिंग लाइक दैट। उस पे अगर 30-40 लाइक आता है, देन व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक आई एम गेटिंग फ्रॉम द पीपल देयर? दे themselves have set the benchmark वहां पे। एंड आप बोल रहे थे कि people are frustrated that till now no one used to share the process or anything. Even I have seen that people share, let us say 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं और 10-15 पॉइंट एंट्री सही जाने पे रॉकेट उड़ाते हैं। एंड बट अगेन ऑन द अदर हैंड, उस ट्वीट के नीचे आप रिप्लाईज देखोगे ना, पब्लिक विल बी प्रेजिंग सेइंग दैट वंडरफुल कॉल सर, एक्सेलेंट ट्रेड सर। क्या पब्लिक को हाई स्कूल एलिमेंट्री मैथ नहीं आती जहां रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं वो लोग? नो, नहीं बट आती, बिकॉज नहीं आती, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ नहीं ना आती। भाई, नहीं आती भाई, इंडियन नहीं सारे भाई, ऐसे ही उनको, है। भैया नहीं सुनो भाई, सर, एक होल्ड बोथ ऑफ यू, प्लीज प्लीज लिसन। जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया था मेरे को कुछ भी नहीं आता था, ठीक है? जबकि मैं तो इंस्टीट्यूशन से चालू किया था और मेरे टाइम पे ट्विटर भी नहीं था कि मैं किसी को पूछ सकता हूँ। मैं एक ब्रोकरेज हाउस में एक ट्रेडर के बगल में जाके बैठता था। देन इंस्टीट्यूशन में भी मैं, जो मेरा हेड ट्रेडर था उसके बगल में जाके बैठता था। पूरा पूरा दिन निकल जाता था, वो अपना स्क्रीन भी नहीं देखने देता था। नहीं आता है, कोई आपको सिखाएगा, ये एक्सपेक्टेशन किसने दी है? हम बच्चे थोड़ी ना है, राइट? नहीं आता है तो नहीं आता है, राइट? नोबडी ओज टू टीच यू एनीथिंग।
समझे इस बात को, उसको जो अच्छा लगेगा वो पब्लिश करेगा। दैट इज द हार्ड ट्रूथ, दैट इज द ग्रोन अप ट्रूथ कि मैं उस टाइम ट्विटर नहीं था, यूट्यूब नहीं था, छटपट करके रह जाता। सिंपल चीज होती है, उस टाइम पे मंथली ऑप्शन बहुत चलता था, मंथली ऑप्शन को एडजस्ट करके आप 2-3% बना सकते हो, राइट? वो डेल्टा कैसे एडजस्ट करना है कोई बताने को रेडी नहीं था, दैट वाज द सीक्रेट। और क्यों कोई बताएगा, राइट? मैं ट्रेडिंग फ्लोर्स पे गया हूं, लोगों से मिला हूं और 2-3 घंटे वेट किया है कि सर बता दो, नहीं बताते लोग। आज भी चले जाओ, जो पीपल हु आर नॉट फेमस ऑन ट्विटर, पीपल हु आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी ऑन ट्विटर, उनको जाके पर्सनली मिलो, अगर कोई कॉन्टैक्ट और उनसे पूछो उनका क्या ट्रेड सीक्रेट है। एनी गुड स्ट्रेटजी कैन बी एक्सप्लेन ओनली इन हाफ एन आवर, वो नहीं बता के देंगे। बिकॉज द वर्ल्ड इज लाइक दैट, नोबडी ओज यू एनीथिंग। हम लोगों को क्यों बताते हैं? बिकॉज हमारी एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि हमें लाइक्स मिलेंगे, हमें फॉलोअर्स मिलेंगे, हमें सोशल मीडिया रीच मिलेगी। और मैं बहुत बार बोल चुका हूं, उसके थ्रू हम कुछ बेचेंगे, यही गेम प्लान है। कोई आदमी पीएमएस एडवाइजरी बेच रहा है, कोई आदमी रजिस्टर्ड आरए है वो बेच रहा है, कोई अपना टेलीग्राम बेच रहा है। और देयर इज, इफ आई एम पुटिंग फूड ऑन द टेबल फॉर माय फैमिली, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट फैक्ट। ठीक है? कैन आई स्पीक समथिंग? मेरी आवाज आ रही है? बोलो बोलो। हाँ एंड इट कपिल इज भाई, नॉट पर्सनली अगेंस्ट यू, व्हाट यू आर सेइंग इज अ वेरी लेजिट पॉइंट, लॉट ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, अभी मैं एकदम सिंपल See, वो ठीक है, सिर्फ नहीं सूर्य भाई, आप forget इसको all that, okay? डिस्कशन I'll बना tell लो, you something. डिस्कशन चलता मैं पूरा रहेगा। कपिल भाई, किलर भाई उसको कपिल भाई, बोल लेने दो, लेट हिम मैं स्पीक। पूरा वन लाइन खत्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं एकदम सिंपल बंदा हूँ, ठीक है। मैंने खुद 3-3.5 साल स्ट्रगल किया सीखने के लिए, अब शायद मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ, ठीक है। मेरे को ये चीजें नहीं पता थी, और अगर मेरे को नहीं पता थी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती कि भाई अगर आप किसी चीज को रीट्वीट कर रहे हो या उसमें कमेंट में अच्छा है लिखते हो तो वो बंदा खुश होता है। रीजन बीइंग, हम अगर देखें तो किसी भी ट्वीट के 300-400 रीट्वीट्स होते हैं, 500-600 तो नीचे कमेंट्स होते हैं, उसमें कितने सारे सही होते हैं गलत होते हैं वो कभी देखा नहीं है, ठीक है। तो यस, मैं पॉइंट लेता हूँ कि अगर ऐसा कुछ रहता है, अच्छा लगता है तो उसको रीट्वीट करो या ये करो, जिससे आप लोगों का या जो अच्छा लिखते हैं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। ये चीज मैं एज ए पॉइंट ले लेता हूँ। बट क्या ये सबको पता है? नहीं पता है, मेरे को वो चीज नहीं पता। और अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई उन लोगों को भी शायद नहीं पता हो, 50-50%, ठीक है। तो यस, आपका पॉइंट सही है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं क्या बोल रहा था कि जो उसको सही करने का तरीका शायद कुछ और होना चाहिए। और यस, इंडियंस हैं तो पहले एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आप लड़की का फोटो लगाओ, आपके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। आप कुछ भी ऐसी चीजें लिखो, आपको लाइक्स हो गया, रीट्वीट्स हो गया, कमेंट्स हो गया, ज्यादा मिलेंगे। सही चीज, साइकोलॉजी की चीज बोलोगे, नहीं मिलेंगे। या पता नहीं है कि भाई इसमें भी कमेंट करना है, सही है गलत है, डिस्कशन करना है। तो आपके एफर्ट्स वाइज, आपके एक्सपीरियंस वाइज, हम तो बहुत छोटे ट्रेडर हैं, तो ये चीज मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अब तो मैं एक चीज मैं और बताता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं, सूर्या भाई केवल आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी आप बोलो मैं फ्रॉड हूँ या ये फ्रॉड है वो फ्रॉड है, वो अपनी जगह पे है। बट दिस इज द गोल्डन पीरियड, स्वीट स्पॉट ऑफ ट्रेडिंग, आई एम टेलिंग यू। आज से 15 साल पहले आप मर के रह जाओ, कोई मीडियम नहीं था जहां पे आप सीख लो। इंडिया की तो कोई बुक्स भी नहीं थी, फॉरेन ऑथर की बुक्स थी। और जैसे हमारे जैसे लोग जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, वो साला आधा समझ में नहीं आता था कि कैंडल स्टिक क्या होती है। तो कैंडल तो मोमबत्ती को बोलते हैं, राइट? इट इज अ गोल्डन पीरियड। आप अगर यूट्यूब में जाओगे और आप 100 वीडियो देखोगे, उसमें से आपको 20-30 वीडियो ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत से बनाए गए होंगे, बहुत जेन्युइन बनाए गए होंगे, कुछ आपको समझ में आएगा। अब जैसे गाड़ी चलाना आप सीखते हो, जब आप थोड़ा बहुत मैदान में चला के सीखते हो ट्रेनिंग एरिया में, फिर जब रियल में चलाना चालू करते हो, जो सामने बिल्ली आती है, वो एक बच्चा आता है और इधर से तांगा जा रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, तभी आप परफेक्ट होते हो एज अ ट्रेडर, राइट? ये प्लेटफॉर्म मिला। आज से 10 साल बाद भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज एआई आने वाला है, फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गोज आने वाले हैं, हम और आप बाहर होने वाले हैं, ठीक है? 10 नहीं तो 15 साल में। सो दिस इज द स्वीट स्पॉट। और मैंने बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो 3 साल पहले बहुत शेयर करते थे, ओके, दे हैव स्टॉप्ड शेयरिंग बिकॉज उनके एक ट्वीट के पीछे 400-500 लोग हैरेस कर रहे हो, उनको माँ बहन की गालियां दे रहे हो, उनको नेम्स कॉल कर रहे हैं, उनको उल जलूल की बातें कर रहे हैं, उनसे मतलब मंद बुद्धि वाले स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो एंड लॉट ऑफ पीपल, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली स्टॉप्ड शेयरिंग थिंग्स। आज से 3 साल पहले के जो स्टार्स थे, जो
उस टाइम के बड़े ट्रेडर थे, वो जाके उनका टाइमलाइन उठा लो, उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया, बिकॉज उनका पुराने ट्वीट भी चले जाओ, 2 साल पुराने उनके ट्वीट पे चले जाओ, यू विल सी सो मेनी सेंसलेस कमेंट्स, सो मेनी पीपल गेटिंग पर्सनल। आखिर अंत में क्यों? अगर किसी को पैसा कमाना है, वेबिनार बेचना है, सेमिनार बेचना है, वो वैसे भी बेच लेगा, वो वैसे भी कमा लेगा, राइट? लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कि मुझे मतलब लोग समझे, एक स्टेटस के लिए, लोगों के प्यार के लिए, जिस भी वजह से बहुत से लोग बहुत जेन्युइन कंटेंट शेयर कर रहे थे, अभी भी शेयर कर रहे हैं। ये जो फैल रहा है रायता, इससे अल्टीमेटली रिटेल का ही नुकसान होने वाला है। एक तो मैंने जो बोला, ये जो वेरिफिकेशन स्कीम आएगी, इसमें जो वेरिफिकेशन वाले जो लोग होंगे वही लोग कमाएंगे अल्टीमेटली, राइट? जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, इट हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ यू शेयरिंग योर ट्विटर क्रेडेंशियल्स, यू शेयरिंग योर ब्रोकर क्रेडेंशियल्स। वो मैंने खैर पूरा कवर कर दिया, अभी तो लॉट ऑफ पीपल हैव ज्वाइंड लेट, राइट? तो ये गोल्डन पीरियड है। आपको जो नहीं अच्छा लगता है, जो अगर आपको लगता है कि ये आनंदेबल जो है, ये बहुत लोग मुझे ठरकेबल बुलाते हैं, विच इज वेरी फनी, तो ये आनंदेबल तो फ्रॉड है, आप आनंदेबल को ब्लॉक कर दो। लुक एट द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। आपको लगता है XYZ भी फ्रॉड है, उसको भी ब्लॉक कर दो, आप 100 लोगों को ब्लॉक कर दो, फिर भी आपके पास 20 लोग बचेंगे जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, राइट? आज मैं बता रहा हूं, आज मैं इतने किसी ने MTM वेरीफाइड स्क्रीनशॉट शेयर किया था, सम अननोन ट्रेडर, आजकल तो बहुत नए नए लोग भी, उसमें उसकी मैंने पोजीशंस देखी एंड आई सॉ सम न्यू इनसाइट्स। मैंने उसको चार्ट से कोरिलेट किया एंड इट वाज एन आहा मोमेंट फॉर मी कि हाँ यार, ये तो वर्क करेगा, मैंने पहले क्यों नहीं देखा, राइट? उसने 4-5 ट्रेड उसकी ओपन थी जो वो कल शायद स्क्वायर ऑफ करेगा या कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो मैंने देखा यार कि यार, तो इवन आई एम लर्निंग समथिंग टुडे। आप लोग, बहुत से लोग अभी एक स्ट्रैटेजी लेके बैठे हो, एक कोई सेटअप लेके बैठे हो, उसमें पिछले 6 महीने से 1-1, 2-2, 4-4% बन रहा है, एंड देन अभी आप जज बन गए, किसका ट्वीट अच्छा है, मैं रिट्वीट करेगा, मैं लाइक करेगा, नहीं तो मैं ट्रोल करेगा। टाइम वेस्ट मत करो। Yeah, anybody else? Dr. Srinivas is also here. Anybody wants to speak, just ask for a mic. Normally I don't speak on such issues, but people are getting so personal against forming kind of a mob and trying to harass one certain individual. We don't know what the mental state of a person is. यार मत करो ऐसा, मेरे हिसाब से it's not good. It doesn't reflect good on you. I'll close it in another 10-15 minutes. If anybody wants to add anything, please ask for a mic. Yeah, hi, Anand ji. One by one. Hello. Yeah, shall I speak now? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. बोलिए. Like, ठीक है, see, everybody has an intent for any kind of presence. For example, if somebody is active on social media, they just want some, friends, some followers, or somebody just, spends their time on social media just for time pass, right? It's a good way to connect with people. Even trolling also, can be a form of engagement with other people, right? So people tend to collect together. For example, if some people are selling training courses, they tend to flock together. Some people who are trolling, they also tend to flock together. ठीक है, मतलब एक ग्रुप बन रहा है उनके बीच में. The issue here is like what, like जैसे आपने भी एक शेयर किया शायद है ना, like a YouTuber, because people liked him eating like trash foods. He started eating more of trash foods. He lost his fitness. Then he had to undergo like so many surgeries. So engagement के लिए आप कितना दूर तक जाओगे? That's a like tipping point. For example, even PR Sundar, like whenever he posted offensive tweets. Sir, we are not taking any names. That's like humble request. Yeah. So he had. I don't know किसको क्या बुरा लग जाएगा. So I don't want that. The idea is कि it is getting to a level, now that you have taken the name, I'll tell you what. I have learned so much from Mr. PR Sundar when nothing was there 3 years, 4 years back, and he was not even popular. He didn't have any. He used to write a morning blog. It was point wise. Very, very few old traders will know. It was very helpful for discretionary traders. Yeah, Okay. yeah, I agree. Like he used to write his blogspot. Just give me one more minute now that you have taken his name. So let me clear the air from my side at least. And he knows how to capitalize on social media. I don't know whether he's a trader or not, good trader or not. I'm not commenting. But whatever he has earned from YouTube, whatever he has earned from social media, it is commendable. Okay, as a business. And that too, look at his age. He's 58. Okay. Now everybody talks about what a kind of such a dirty and bad reply PR Sundar has given. But
coming from content publisher on social media, sometimes people get onto your nerves, really, really onto your nerves. Okay, and then we are all forced to say things we don't mean. If we get into a train fight, if it gets really ugly, we tend to give Hindi galis, and if somebody takes literal meaning of that Hindi gali, tumhari maa ki, tumhari behan ki, it becomes very ugly, right? So what that gentleman did was nothing but a gali. And again, I'm very against any kind of cancel culture. One particular sentence he said, and everybody's saying cancel PR Sundar, cancel from TV, cancel from face to face, cancel from this. Tomorrow it can happen to us. We all lose our mind, right? I don't know whether he's a serial offender or not, but people are targeting him based on one particular sentence. Okay. So, I mean, good that we don't take name, but now that you have taken name, so I'm just telling you that he's just a businessman, and now people have complained, say, like, what kind of person we have become while we are destroying somebody's business which he has created in over 3-4 years. Is it jealousy? Does he owe anything to us? Absolutely. Like what I say is, see, there could be several facets of an individual, right? Like he could be a good educator, he could be a good trader, but in social media there are like single points, right? Single tweets which lead to suspension of accounts, single tweets which destroys like political careers, social careers. So all these things, do happen with everybody. The question is like, with the aim to influence people, how much are we getting influenced by people around us? For example, if somebody trolls other people and other trolls support you, what if you become a serial troller? So, like, this is the kind of effect social media has on individuals and the mob. The issue is, for example, if somebody shares, like, say, pseudoscientific things, for example, somebody shares that, you just walk on your barefoot in this place and you will get some, a great gift from God. The question is about ethics. Is it right to say the same? Is it harmful or is it harmless? So when we see about harm, for example, like particularly with money, which can make or break somebody's family, then the question of ethics also pops up, right? If somebody makes a claim which is very unrealistic, which destroys somebody's health, life, money. Sir, I will not talk about any other individual, but I can tell you, and you know me, I have benefited money-wise from PR Sundar's calls. So we can rest it there. I know one of my follower. I have done a podcast with PR Sundar, not PR Sundar, with that follower. He had taken his services, for which he is under investigation by SEBI, and that gentleman had made money over a period of 1 year, all audited calls and so on. So I'm not getting into all that. I mean, we can't be judge of everything. Like, again, किसने वही issue हो जाता है, किसने beef खाया, किसने पूजा किया, किसने क्या किया. I mean, as a society, if we start judging everyone and anyone, especially people who have not wronged us, then when we are judged, are we 100% correct on various aspects? See, everybody fault us, but these are sensitive issues. What I'm saying is why, for example, something related to money, health, or God, all these things invites like, backlash fast. Why beyond when it goes beyond a point? See, social media backlash is fine, but if that backlash spills over to real life, where businesses are destroyed, when people are threatened, when people are stabbed, then we have to. Hello, am I audible? Yeah. Then we have to draw a line, right? Now his business is threatened. Now everything is threatened. And in my opening remark, I said TV walas are most corrupt, right? They do front running. They give wrong calls. They don't audit their and a lot of RAs. You go and follow their handle. The kind of advice that they are giving, right? So who are we to single out anyone, right? Yeah, that is Anand bhai, can I speak? Right? Yeah, go ahead, please sir. Who has the social authority to? श्रीनिवास भाई, मुझे बस 5 मिनट दे दो. मैं कहीं बाहर हूँ, फिर मुझे रखना पड़ेगा. बस 5 मिनट दे दो. मैं 5 मिनट बाद खत्म करूंगा. कौन बोल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मैं बोल रहा हूँ, कपिल रामा. बोलिए. तो बेसिकली जो पूरा ट्रोलिंग और वो सब चल रहा है कि कौन फ्रॉड है और कौन ओरिजिनल है, ठीक. अभी उसमें before we start speaking, we are unfortunately we took name of PR, so we are not going to take any names. नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता. And not even examples कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये अच्छा है, ये खराब है, वो उसमें नहीं जा रहे हैं. As a concept, right? So as a concept, सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा मतलब आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा सभी लोगों का, जितने लोग सुन रहे हैं,
कि अभी क्या हुआ, जैसे मैंने मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को के मैसेज डिलीट किए, इट्स माय प्रॉपर्टी, वो मेरा पब्लिक चैनल है, मैं उसमें कुछ भी करूँ। और सेकंड थिंग, मैंने उसमें सारा कंटेंट ऑलमोस्ट फ्री, मतलब 100% वो फ्री कंटेंट था। आई शेयर्ड माई व्यूज, आई शेयर्ड माई ट्रेड्स। सो ऐसा हो सकता है कि पिछले 2 साल में मैंने उसमें कहीं बाई सेल लिखा हो कि ये बाई कर लो, ये सेल कर लो, ठीक, वो सब फ्री था, मैंने उससे कुछ चार्ज तो किया नहीं किसी को भी। लेकिन अगर कल को कोई इंक्वायरी आती है किसी भी टाइप का, फर्स्ट थिंग कुछ भी आता है, तो अगर मेरा वो 22 सेल जो मैंने फ्री में लोगों को दिया व्यू, उसी की वजह से अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मैं क्यों लूँ, वाई शुड आई, फर्स्ट थिंग। तो इसी तरीके से बहुत सारे कपिल भाई, लोगों ने, मैं आपकी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं, अगर मैं किसी इसको ने भी मैं इस पे आगे बता रहा हूँ, मैं इस पे आगे मुझे पूरा पॉइंट बता रहा हूँ। एक मिनट दीजिए। किसी ने भी डिलीट किया, नहीं डिलीट किया, ये किसी तीसरे का तो सब्जेक्ट मैटर हाँ, होना ही नहीं चाहिए, कंसर्न राइट? नहीं होना और चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन के बियॉन्ड वी डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन। अगर मुझे कल के थ्रेटेंड लगेगा, मान लो कि कल के मैंने कुछ लिखा विच इज विच आई कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल और कैन बी थ्रेटेंड, अगर मैंने पैसे लिए भी हैं कि किसी और के बाप का क्या जाता है, मैं मेरा मन आएगा, मैं डिलीट करेगा, राइट? हाँ, उसके लिए आई तो कैन बी अभी हरास, राइट? हाँ, अभी अगर इसमें मैंने क्या किसी से हुआ, पैसे लिए हैं, उस बंदे को कुछ प्रॉब्लम है तो 1 to 1 वो सॉल्व करेगा, राइट? और हाँ, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी चला रहा हूँ, ठीक है, और किसी बंदे को कोई नुकसान हुआ, वो हुआ, ही इज ऑल्सो पार्टी टू इट। वो कोई बच्चा तो है नहीं। yes, If someone is giving money for an unregistered advisory, तो it is his fault as well, right? तो अभी क्या होगा, मैं कंटिन्यू, मतलब मुझे 2 मिनट और बोलना, कंटिन्यू। हाँ, बोलिए। कि अगर अब क्या होगा कि जो लोग, अधिकतर लोग, मतलब आप और हम, बहुत सारे लोगों के फ्री टेलीग्राम चैनल हैं, एवरीबडी वाज शेयरिंग देयर व्यूज एंड देयर ट्रेड्स। अभी राइट नाउ क्या होगा, सबने बंद कर दिया सारा व्यू, मतलब कुछ लर्निंग के लिए भी जो था वो सबने बंद कर दिया। अब ये किसका लॉस है? इट्स द लॉस ऑफ रिटेलर, जो वहां तो कुछ ना कुछ सीख रहा था, वो पे नहीं कर रहा था कुछ भी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहीं पे नहीं कर रहे थे, लेकिन सबके टेलीग्राम में जाके कुछ ना कुछ देख रहे थे, कुछ ना कुछ ट्रेड सीख रहे थे, कोई ट्रेड लिया है तो क्यों लिया है। तो अभी वो सब हो गया बंद, कंप्लीट बंद, और वो रहेगा भी अब आगे। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई आदमी पसंद नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई ये फ्रॉड है, जस्ट अनफॉलो हिम। और सिंपल सा ऑप्शन है ट्विटर पे अनफॉलो और ब्लॉक करने का, सिंपल सा ऑप्शन है टेलीग्राम चैनल को लीव करने का। भाई अगर मुझे कोई जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे बहुत से लोग पसंद नहीं है ट्विटर पे, मैं उनको नहीं फॉलो करता, इवन म्यूट करके रखता हूँ अनफॉलोड में भी, कि उनका मुझे ट्वीट भी नहीं दिखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं जीवन में। सो सिंपल है क्या, इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि आपको गाली देनी है आके, क्यों गाली देनी है और आपको आके। और अभी 3 दिन पहले सब पूरा, मतलब कि पूरा ट्वीट पे वो चल रहा था, महिला को ऐसे बोल दिया, लेडी को ऐसे बोल दिया, ये तो बड़ा दिक्कत है। अभी आज ही बेचारी 2-4 लेडीज ने अगर ये लिखा कि उन्हें थ्रेटन फील हो रहा है, उसके बाद मतलब कितना डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं आपके, कितने, मतलब कोई लिमिट हो सकती है डबल स्टैंडर्ड की। भाई आप उनका भी तो सुनो, आपने एक तरफ से चिल्लाए चले जा रहे हो सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, और इवन वो सारे लोग खुद पीएमएस चला रहे हैं, वो भी इलीगल है। वो तो सबसे बड़ा इलीगल है। मैं तो अक्सर ट्वीट करता रहता हूँ कि आप देखोगे, इसके लिए लो जो शिवराजपुरी था वो जेल गया था, उससे पहले मिनहांस वाला जो था भाटिया वो जेल गया, राइट? वो तो सबसे बड़ा इलीगल काम है। और रही बात, मतलब हमें बोला ना, मैंने देखा किसी लड़की की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका इनकम टैक्स, उसका पिन कोड, मतलब पीपल आर सो ब्लड हंग्री कि कुछ भी, मतलब अगर कल का पता लग जाए ना तो उसके घर भी पहुंच जाएंगे, कहो कि वहां पे कुछ करने के लिए, जिसने कोई कुछ बिगाड़ा नहीं है, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। प्रॉब्लम क्या था कि पहले एक ट्रेडर को टारगेट करना था, उसने वुमेन के खिलाफ गलत लिखा था, सब जानते हैं, तो सबने बड़ा अच्छा, कपिल भाई बता दो, वो गलत का मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे भी झगड़ा होता है, पहला शब्द जो मुंह से निकलता है वो माँ बहन की बेइज्जती निकलती है। उसका लिटरल सेंस ले लो तो हर आदमी, मतलब हम इस हमाम में सब नंगे हैं, ठीक है? औरत की रिस्पेक्ट करना बहुत मेहनत का काम होता है, ठीक है? और जब आप जैसे ही लड़ाई होती है ना, तो सबसे पहले डोर से बाहर औरत की रिस्पेक्ट जाती है, जो आपको बहुत प्यारी है, राइट? आपकी माँ, आपकी बहन। तो उसने गुस्से में आके कुछ बोला, एंड आई एम कैंसिल कल्चर तो एकदम गलत है एज ए सोसाइटी, लाइक इन एनी हम तो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते ही हैं कि ये जर्नलिस्ट को कैंसिल कर दो, ये प्रीस्ट को कैंसिल कर दो, ये बाबा को कैंसिल कर दो, या ये पॉलिटिशियन को कैंसिल कर दो। दिस इज सो रॉन्ग, वेदर इट इज इन यूएस और चाइना और इंडिया।
और ऐसा उसने कुछ नहीं लिखा जो हमने और आपने गुस्से में किसी को बोला ना होगा, राइट? और आप कम से कम दूसरे का हमेशा पक्ष समझने की कोशिश करो। और जैसे लोग बोल रहे हैं वेबिनार चला रहे हैं, मैं तो दूसरों का आर्टिकल देख ही नहीं पाता हूँ, बट मैंने उसका जाके देखा ऑफ लेट, जब से ये वेरीफाइड एमटीएम चला था, लोग उसको नॉन स्टॉप ऐसा हैरेस कर रहे थे कि मतलब उसके मतलब कहते हैं ना कि ब्लड को बॉयल करा देना। और उसके बाद तो क्या होता है कि एवरीबॉडी इज जेलस, सबको जो है जेलसी है, तो अब पुल डाउन करना है तो मौका मिल गया, राइट? Exactly. See, the whole point is also selling his product. Basically, he's not doing trading. Why is he not doing trading? Why is selling product? I'm also doing trading and I'm also selling my product. But he can sell his product and we can't. This is a double standard. The only point, Kapil bhai, about all these verified things is that it's very good, but my only question is who made them the judge, jury, and executioner of determining the authenticity of a trader? Is my whole point. अभिषेक भाई ऐसा हो गया, जबरदस्ती वंदे मातरम बोल के दिखाओ, नहीं तो तुम देशभक्त नहीं, तुम गद्दार हो। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपको वैसे ही हो गया। अभी अगर आज आनंदवेल अगर अपना वेरीफाइड पैनल दिखाएगा तो पक्का फ्रॉड है, बराबर है? हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये गलत है ना, क्योंकि गलत है ना, ये बुलिंग कल्चर गलत है। और दूसरा क्या इसमें आ जाएगा, इसमें अभी 10 वेरीफाई करने वाले हैं, 3-4 तो मैं देख ही चुका हूँ। एक तो सबसे बड़ा टीवी पे आ गया है, और एक जो है एक और आ गया है, और ये 2 और आ गए हैं जो अभी ढेर सारे आ जाएंगे जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। उनका कैरेक्टर कितना बढ़िया है वो तो एक सेकंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, राइट? तो अब आप अपना ट्विटर के क्रेडेंशियल शेयर करो, आप अपने ब्रोकर के क्रेडेंशियल शेयर करो विद अ थर्ड पार्टी जिनको आप जानते भी नहीं हो, स्ट्रेंजर्स को प्रूव करने के लिए कि आप जेन्युइन हो। प्राइवेसी, डाटा की प्राइवेसी तो बची ही नहीं। डाटा प्राइवेसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपके ब्रोकर अकाउंट की प्राइवेसी की बात कर रहा हूं। आपके ट्विटर, दे वांट योर ट्विटर राइट्स, ट्विटर का एक्सेस चाहिए उनको, राइट? Monica ma'am raised her hand, so can we? Yeah, go ahead. Sorry, I became very heated. मैं बहुत दिन से चुप था, एक भी मैंने ट्वीट नहीं किया, पर आज मैंने देखा कि कल तक जो लोग औरत की इज्जत की बात कर रहे थे, आज 2-3 औरतों को इतना ट्रोल कर रहे हैं, मैं ना तो औरत की बहुत इज्जत करता हूँ और ना तो मैं ट्रोलिंग करता हूँ, बट मुझे ये डबल स्टैंडर्ड मुझे लगा कि बोलना जरूरी है कि बस अब रुक जाओ यार तुम लोग। नहीं, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मेजरली प्रॉब्लम क्या है, फ्रॉड, स्कैम सब सुन लिया हम लोगों ने, लेकिन जो अब्यूजिव लैंग्वेज वो इतना मेंटली हिट हुआ हम लोगों को, मुझे मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, बिकॉज इतना मोरल पुलिसिंग हो रहा है, फेक बोल रहे हैं, स्कैम बोल रहे हैं, फ्रॉडस्टर बोल रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं। हमने हेल्प किया है इनका? मैंने 1.5 ईयर मैंने फ्री चैनल चलाया है, लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मैंने उनको व्यू शेयर किए, बदले में आज दे आर अब्यूजिंग मी कि तुम फ्रॉड हो, तुम स्कैमस्टर हो, तुम ये हो। और उसके बाद इतना मतलब इन लोग इतना डबल स्टैंडर्ड हो गए हैं। किसी का अगर ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी को 70% ड्रॉडाउन लेके चढ़ा रहे हैं, किसी का कुछ लॉस किसकी ट्रेडिंग में नहीं होता है, हमारी ट्रेडिंग में भी लॉसेस होते हैं, डीडी में आते हैं, तो उसको आप लोग पब्लिकली मजाक बना रहे हैं वो चीजों का। और हर चीज में अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली हमसे सीख रहे हैं, दीज पीपल आर वेरी हैप्पी विद अस, वो हर जगह जाके आपकी तारीफ कर रहे हैं हमारी। जो लोगों ने कभी हमारी को देखा ही नहीं, हमारी बात को सुना ही नहीं, हमारी क्लासेस ज्वाइन करी ही नहीं, वो लोग हमको स्कैम बोल रहे हैं। वो लोग तो कभी सीखना चाहते ही नहीं है, बिकॉज उनका काम है सिर्फ ट्रोलिंग करना, आके लोगों को गालियां देना ट्विटर पे कमेंट में। वो अगर किसी भी पेड मेंबर ने किसी भी अगेंस्ट ट्रेनर के अगेंस्ट में कुछ बोला है तो उसको बात को हम सुनेंगे, बिकॉज ही हैज पेड फॉर समथिंग एंड ही इज नॉट हैप्पी विद द सर्विस। बट इफ एनीबडी हु हैज नॉट टेकन एनी सर्विस फॉर एनीबडी, उसने किसी का वेबिनार ज्वाइन ही नहीं किया, तो वो लोग क्यों मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं, जज बन रहे हैं? जिन लोगों ने अभी केस हुआ था 3-4 साल पहले, किसी भी स्टूडेंट ने आज तक एक भी क्वेश्चन उठाया है कि ये लड़की फ्रॉड है, ये लड़का, ये आदमी फ्रॉड है, ये क्लासेस में सही से इसने नहीं सिखाया, हमको सही से नहीं बताया वेबिनार में, उसको हम एंटरटेन करेंगे। पर जिन लोगों ने हमारे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, वो लोग तो आधे लोग तो हमें फॉलो भी नहीं करते हैं, वो आके हमको गालियां दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? और इसको कौन बढ़ा रहा है? ये कल्चर कौन कह रहा है, प्रोवोक कर रहा है लोगों की, सबको स्कैम बोलो, सबको फ्रॉड बोल दिया आपने। इतने ट्विटर पे 2-2, 5-5 साल से लोग हैं, सब फ्रॉड है, सब स्कैम है। वेरीफाइड पीएनएल मुझे कभी करना ही नहीं था किसी थर्ड पार्टी से वेरीफाई कराने का, फिर भी मैंने आउट ऑफ दिस हैरेसमेंट स्टेप लिया कि मैं वेरीफाई कराऊंगी। मैंने आबिद जी को बोला कि आप वो हाइड कर दो नाम, क्योंकि कंपनी अकाउंट का कोई भी नाम पर्सनली लोग घर आ जाएंगे, एड्रेस सर्च करके, गूगल पे सर्च करके, वो फीचर लाओ आप, हम लोग वेरीफाई कराएंगे ना। वो फीचर आ रहा है नहीं कुछ, फिर भी पब्लिक ट्रोल पे ट्रोल कर रही है। और कुछ लोग 2 आईडी बन गई हैं, वो फिनट्विट डिकोडेड और इंडियन फिनट्विट, वो लोग हर कुछ
एक लिमिट होती है एंटरटेनमेंट की भी है, सरकाज़म की भी अभी लिमिट है। आपने भी यूजिंग नाम ले लिया तो लैंग्वेज मैं को चलिए इसके ऊपर भी कमेंट कर देता हाँ हूँ जी। कि देखो होता क्या है, ये लोगों ने मैंने आज तक कभी किसी को ट्रोल नहीं किया, राइट? और अगर कोई भी जो सॉरी आनंद जी, बिफोर आप बात करें, मैं काफी टाइम से वेट कर रही हाँ हूँ। प्लीज प्लीज गो अहेड प्लीज। आपने भी ये बोला है, लेकिन मेरे को एक चीज बोलनी है। आप भी, कपिल जी भी, बाकी सब लोग भी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब एक्सप्रेस करूं कुछ या मैं चुप रहूं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। जस्ट बिकॉज कोई बड़ा आदमी, कोई माँ बहन, जो आपने बोला, मैंने नहीं बोला, गालियां यूज कर रहा है, उसने चाहे कुछ भी किया हो लाइफ में, पहले तो आप लोग 700 लोग सुन रहे हैं आपको, आप उस चीज को कंडेम कैसे नहीं कर रहे हो? और आप खुद कह रहे हो कि हमें गुस्सा आता है तो हम भी करते हैं। ये तो बात सही नहीं है सर। अगर देखिए आप मैं हाँ, कौन बोल रहा है? मैं पहले बहुत लोगों के माइक ऑन ऑफ है। मोनिका जी? हाँ जी, मेरे को इस चीज से अच्छा बहुत बोल बड़ी लीजिए। खुशी है, क्योंकि मैं समझती हूँ हमारी पूरी जो प्रीवियस जनरेशन है वो भी यही करती है, जो अभी वाली है वो भी यही करती है, जो नेक्स्ट है वो भी यही करती है। और अगर आप लोगों का एक ही रिटॉर्ट रहेगा कि बॉस ये तो हम करते ही हैं, हम कहाँ जाएं? और पीआर सुंदर हो या कोई भी हो, जिनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम लोग गलती करते हैं तो हम अपोलोजाइज करते हैं। अगर आप इस चीज की अपॉलोजी, अगर मेन के लिए एक ही अपॉलोजी है कि हमें प्रोवोक किया गया, सॉरी बॉस, बट ये तो मतलब ये सोशल मीडिया पे अनएक्सेप्टेबल है। और मैं आपकी बहुत सब लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ। कपिल जी को मैंने पहले सुना हुआ है, इसीलिए उनको स्पेस पे देखा, इसीलिए मैं ऊपर आई बोलने के लिए। मैं देखिए मैं ये स्पेसिस को नहीं चाहता था कि किसी नाम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करें, बट आपने चूंकि बहुत रेलेवेंट पॉइंट उठाया तो मैं बोल देता हूँ इसके बारे में। देखिए आपको एक चीज बताऊं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, किसी और की बात नहीं करूंगा। मैं 1000 फ्रॉड हो सकता हूं, लेकिन मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। जो गलतियां मैं करता हूं और जिसके लिए मैंने बार बार करी है, अगर किसी बंदे ने एक बार करी है तो मैं उसको दिन रात जाके कंडेम नहीं करूंगा, उसको मैं मारने की कोशिश नहीं करूंगा, उसको उसका बिजनेस डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। मैंने शुरू में ही बोला कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था ये गलतियां मैंने करी हैं, और ट्विटर पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि लोग पीपल बॉयल योर ब्लड, वो आपके पीछे ऐसा पड़ जाते हैं कि वो आप अपना आपा खो देते हो। तो जो गलती मैंने बार बार करी है, सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर वो गलती किसी और ने करी है तो मैं उसको मॉब बन के कंडेम नहीं करूंगा। आई डोंट हैव दैट राइट। आधे लोग जो ये सुन रहे हैं, इन लोगों ने वुमेन को बचाने के लिए उस बंदे को कंडेम किया और आज वुमेन की ट्रोलिंग करने बैठ गए। गलत है सही है तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, हमें कौन सा पता कौन सी वुमेन जो है वो फ्रॉड है, कौन सी जेन्युइन है, क्या है उसका, और उसका कहां तक सर्टिफिकेट हम लाते रहेंगे, राइट? तो वो दोगलापन मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको पहले ही बोला कि मेरे अंदर वो कमी है, जब मुझे गुस्सा आता है, और मेरे जैसे बहुत से मेन हैं गलत करते हैं, पूरी जनरेशन ही गलत है, राइट? कि जब बहुत गुस्सा आता है तो हम ऐसी चीजें बोलते हैं जो हम बाद में बहुत रिग्रेट भी करते हैं, और ऐसी चीजें बोलते हैं जो वुमेन के लिए बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होती हैं। ओके, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ और बहुत गलत है, लेकिन उसके लिए किसी को सिंगल आउट करके उसको पत्थरों से मार डालना ये भी गलत है, ठीक है? तो बहुत गलत किया, उसको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन उसको क्या वही अकेला गलत कर रहा है? क्या उसी को सिंगल आउट करके हम पनिश करें? एज अ सोसाइटी ये और भी ज्यादा गलत है, लड़कियों के लिए भी गलत है, वुमेन के लिए भी गलत है, क्योंकि वी आर सेटिंग अ वेरी रॉन्ग एग्जांपल कि आप अगर पकड़े गए, आप अनलकी हो तो आपको मार डालेंगे, लेकिन आप सड़क पे आपकी गाड़ी की टक्कर हो गई, आप सेम गाली दोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पकड़े नहीं गए। तो एज अ सोसाइटी हम जब ऐसा वर्क करते हैं कि पकड़े गए तो ये लगे कि यार मुझे अब प्रोपोर्शनेट सजा मिलेगी, उसके बजाय जब हमें ये लगता है यार पकड़े गए, अब मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज तो मैं पिटूंगा, वो सोसाइटी आगे चल के बहुत ही डिटोरिएट कर जाती है। पकड़े जाने पे हमें लगना चाहिए कि हमें अप्रोप्रिएट सजा जरूर मिलेगी बिना किसी लक फैक्टर के, जबकि इंडिया में जब पकड़े जाओ तो लगता है यार आज किस्मत बहुत खराब है, आज तो मैं इतना मारा जाऊंगा कहीं मरी ना जाऊं। ट्रेन में भी जो मोलेस्टेशन होता है, जो लड़का मोलेस्ट करता है, वो इसलिए दुखी नहीं होता है कि वो पकड़ा गया, उसने गलत काम किया, उसे लगता है आज उसकी किस्मत खराब है। हमें इसको भी कहीं ना कहीं चेंज करना है, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट होनी चाहिए। उसने जो करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा किया, उसने जो इतनी मेहनत करी दिन रात, दिन के 3 वीडियो बंदा बनाता है, मैंने कभी बात भी नहीं करी उस बंदे से, कोई हमदर्दी नहीं है, मैं इस कॉन्सेप्ट को डिफेंड कर रहा हूं कि सजा एप्रोप्रिएट होनी चाहिए मैम। एज अ सोसाइटी दिन के 3 वीडियो बनाता है, बहुत मेहनत करता है वो, अपने उसमें उसकी स्पॉन्सरशिप वो सब मैंने करा है, ट्राई करा है वो सब करने का, मैंने भी 102 वीडियो बनाए, जान निकल जाती है। तो एप्रोप्रिएट पनिशमेंट से जब सोसाइटी भागती है, आप देखिए ना बीफ वाले केस में क्या हुआ कि हल्ला चला, दिल्ली में अक्सर हुआ था पिछले 2014 के जस्ट बाद या जस्ट पहले, कि गुड़गांव में गाड़ियां रोक देते थे, उनको जला देते थे कि शक था कि बीफ है उसमें। दैट पनिशमेंट वाज नॉट एप्रोप्रिएट। हो सकता है गौ माता का अपमान हुआ हो, बट पनिशमेंट हैज टू बी अप्रोप्रिएट इन अ जस्ट सोसाइटी।
इस चीज को समझने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, इसलिए मैं तो कंडेम नहीं करूंगा बिल्कुल, और खुलेआम बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, जो 350 लोग, 700 में से 350 लोग जो कल कंडेम कर रहे थे, औरत के कंधे पे बंदूक चला रहे थे, आज वो वही लोग गंदी गंदी ट्रोलिंग कर रहे हैं दूसरी औरतों को, राइट? तो मेरे अंदर, मैं फ्रॉड होऊंगा बहुत लोगों के लिए, बट मेरे अंदर वो दोगलापन नहीं है। बोलिए अब आप। आनंद सर, वन थिंग आई वांटेड टू ऐड हियर। मोनिका जी, एक मिनट ना, मुझे एक चीज ये कहनी थी कि ये जो लोग आके गालियां दे रहे हैं, जो भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स हैं जिनके नीचे लिटरली माँ बहन की गालियां लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कैन नॉट अब्यूज, एंड ऑल्सो फीमेल्स हु आर नोन फेसेस नाउ ऑन ट्विटर, इवन मेल्स, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नोन फेसेस हैं ट्विटर पे, गुस्सा उनको भी आता होगा, इंक्लूडिंग यू आनंद सर। पर आप गालियां इसलिए देते खुल के बिकॉज यू आर अ नेम नाउ, यू आर पीपल नो यू ऑन ट्विटर। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग और यू स्टार्ट अब्यूजिंग, आपके ऊपर लोग चढ़ जाएंगे। बट एट द सेम टाइम आप लड़कियों को आके गालियां दे रहे हैं। अरे आपको प्रॉब्लम में है, आपको जब हेलो सेक्सी, हाय गर्ल, हाय बेब लिखना होता है तो आप तो डीएम में जाके करते हो ये सारी रंगरलियां। तो व्हाई द हेल यू कैन नॉट गो एंड टॉक टू अ गर्ल इन अ डीएम इन केस इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद हर? Why do you start abusing her in front of everyone? Scam है, ये है, वो भाड़ में गया. That's a different thing altogether. But if you have a problem, why the hell you cannot go and talk to a girl in a DM? जब आपको ये बकवास करना होता है तब आप जाके उससे DM में नंबर मांगते हैं, उसका WhatsApp नंबर लेते हैं. You want to talk to her about all the sexy things in the world. But when you have a problem with her, go. If you are a man, go and talk to a person one-to-one on the DM itself. और अगर आपके पास इतनी कर्टेसी है तो अपनी ओरिजिनल आईडी से आइए और उसके बाद बात करिए। जितने ट्रोलर्स हैं, आई एम टेलिंग इट टू देम अपफ्रंटली ऑन देयर फेस, भैया यू डोंट हैव बॉल्स। अगर आपको है, यू नो, इफ यू रियली हैव दैट गट्स, टॉक टू अ पर्सन फ्रॉम योर ओरिजिनल आईडी, क्योंकि वी आर हियर फ्रॉम एन ओरिजिनल आईडी। आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। कौन स्कैम है, कौन ओरिजिनल है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी, यू नो, मींस एनानिमसली मैं सबके लिए बोल रही हूँ। अगर आपको इतनी ट्रोलिंग करनी है तो आप अपनी ओरिजिनल आईडी से आओ ना। आपकी फोटो नहीं होती, 3 दिन पहले आपने आईडी बनाई होती है, मतलब यार हद है। आप किसी के बारे में बिल्कुल लिखिए, यू आर अलाउड टू राइट दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड यू नो व्हाटएवर यू वांट टू पुट ऑन टू सम पर्सन, आप उसके साथ डीएम में भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाले ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो यू गो अहेड एंड यू टॉक टू दैट पर्सन ऑन द कमेंट सेक्शन, बट यू हैव टू फॉलो द सिविक सेंस। एंड इफ यू डोंट हैव दैट, प्लीज लीव सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे आपके लोगों का एंटरटेनमेंट, लोगों को आके एंटरटेनमेंट कर सकें। आप कुछ अच्छी चीज भी करिए। एंड वन थिंग दैट कपिल सर सेड इज वेरी गुड, कि अभी फ्री कंटेंट कोई भी नहीं डालेगा, क्योंकि सबको लोग ट्रोल कर रहे हैं। कोई एक चार्ट भी पोस्ट कर रहा है तो वहां पे यू नो पीपल आर ट्रोलिंग। और व्हेन वी टॉक अबाउट अपना जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाटएवर इट इज, लॉक कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। अरे मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी में अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दूं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इफ यू हैव प्रॉब्लम, गो एंड सॉल्व इट विद समबडी एल्स। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, सॉरी बॉस। And the way people are abusing to anyone, karma hits. आपको भी इतनी गालियां पड़ेंगी ना वापस उसी चीज के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। Why I'm, you know, I'm sorry, maybe I'm sounding very rude, but मुझे प्रॉब्लम इस चीज के लिए है कि आप गालियां क्यों दे रहे हो यार आके? आपको जो बोलना है बोलो। Why are you abusing people? Go and talk to people in DM. और पब्लिकली, मतलब यार अपने घर के संस्कार तो मत दिखाओ कम से कम, और दिखा भी रहे हो तो ओरिजिनल आईडी से आके दिखाओ। नाम लिखो, अपने पिताजी का नाम लिखो, and then have a photo. At least we can see your face, that you know what, who is talking to us. That's it. I'll rest my case. मोनिका जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल दीजिए। बाकी काफी लोग स्पीकर हैं, प्लीज बोलिए। इतना सा कहना है कि हम मेरे वांटेज पॉइंट से मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है, और मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं कपिल जी को नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी भी मेल को नहीं कह रही हूँ, ना फीमेल के लिए कह रही हूँ। गाली देना सोशल मीडिया पे अगर लड़के के लिए खराब है तो लड़की के लिए भी खराब है। लेकिन ये जो है ना कि हम तो ऐसे ही हैं, हमारे मुंह से निकल जाता है, उन्होंने कह दिया, अब उनका बिजनेस है। ये बिजनेस की आड़ में अगर उन्होंने कहा है तो वो सॉरी भी कह सकते हैं। जो उनकी अपॉलॉजी, उन्होंने मैं उनको डिफेंड, सी आई डोंट वांट टू गिव इट एन इंप्रेशन कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, बट आई हैव फॉलोड द केस वेरी क्लोजली। ही सेड सॉरी मेनी टाइम्स बिकॉज़ ही इज लूजिंग crores ऑफ मनी। ही विल से सॉरी, ही इज अ बिजनेसमैन, ही हैज सेड सॉरी। प्रॉब्लम है, crores मनी लूज कर रहे हैं, इसीलिए अपोलोजाइज कर रहे हैं कि सच में अपोलोजाइज कर रहे हैं। मेरा दैट इज द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ मैम। दिल से तो कोई अपोलोजाइज नहीं करता है।
मी टू में भी जिसने अपोलोजाइज किया है तो कोर्ट में अपोलोजाइज किया है, दिल से सॉरी कोई नहीं बोलता मैम, दैट्स अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। आपने बड़ी पीड़ा पकड़ ली, क्योंकि सैम जो हमारे जो FTX वाले हैं वो भी अपोलोजाइज नहीं कर रहे, उनको भी लोगों ने बड़ा बना के रखा हुआ है क्योंकि वो पैसे वाले हैं। अगर पैसे वाले सारे टाइम यही काम करेंगे और सब लोग इस एक ही चीज पे बोलेंगे बॉस कि उनके पास पैसा है। I made my point, you made my point, we can agree to disagree. We'll move on to the core topic. We don't want to discuss one person. I always said he has done something wrong and there should be appropriate punishment. But forming a map and trying to cancel someone, in my humble opinion, is wrong. Wrong, sir. Cancel culture is wrong. But because you said, and there are so many people listening to you, I came to only say one thing. Fair point. I mean, has power and money does not mean that they can do the wrong thing just because they are losing business. Business is lost based on many things, and ethics is the most important thing. Fair enough. I get the point. People who have taken mic now, if they want to add something, I have to conclude it as well. People who have taken mic now. See, the whole point, Anand bhai, is that when we say that someone is a fraud, someone is running a fake service, for example, and what I don't understand is that how can it be generalized with everyone and anyone who has followers in 4 digits or 5 digits and is posting on social media there. I mean, we have to look at the opposite side of the story as well. If someone is telling, as I said before, that आप 50,000 रुपए डिमैट अकाउंट में रख के आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, you can make 5 crores or 50 crores. All you need to do is pay me 500 or 1,000 per month. Then my only question is that आपका common sense कहाँ गया? I mean, isn't it equally the person's responsibility as well there, and not just the responsibility of the person who's running the paid service वहाँ पे? I do agree that there are some frauds and there are some genuine people, but Abhishek, just a minute. See, for example, if somebody shares some health information, right? For example, if you take this with your morning breakfast, something good happens, and people die out of that. And if there is, some qualified doctor voicing his opinion against that, right? This is fake information. This can harm multiple people. So is this right or wrong? For example, there is a dangerous information out there in the public. Sir, I have a real case, so I will answer. Just give me 1 second. Anand bhai, 1 second. My point is, my only question is, what happened to the person's common sense who is looking at that tweet or who is looking, for example, blaming, right? If I see, this is victim blaming, like saying. No, this is not victim blaming, Srinivas bhai. Killer bhai, give me a 1 minute, exact 1 minute. I'll give you. Okay, Srinivas sir, I follow a lot of doctors as well. Okay, so I was following one of the doctors, and he has made elaborate video on how some of the herbal medicines harm a person. I am a firm believer in allopathy. I don't believe homeopathy, although my entire family believes homeopathy and Ayurveda. I won't put any homeopathy or Ayurveda in my body. That person has made, he's a liver doctor. He has made an elaborate video how, Herbalife or some kind of product has injured liver. Okay. I read the paper as well. Okay. Went into the details of the paper. It was, I think in medicine, you guys call it an observational study and so on. Liver injury did happen. If I give you an additional data that 30 to 40% of the supplements in India being sold are plain and simple, adulterated and counterfeit, because it's an expensive product, and you will find a lot of articles. Whether that supplement really had Herbalife product or not, we don't know. A liver doctor said something. He has a right to publish it. He should publish it, that he found, liver injury in patients who had taken that supplement. Now, as an allopathic doctor, if he makes it a life mission to troll every Ayurveda doctor, to troll every Ayurveda product, that is wrong. That's what I'm objecting to. He made a video, ठीक है, हर्बल लाइफ से नुकसान होता है या हर्बल प्रोडक्ट से नुकसान होता है या गिलोई से नुकसान होता है. गिलोई is one of the Ayurvedic products which my parents also take. Okay, so it's good. Information is good. But if he takes it a life mission on Twitter, spending 3-4 hours every day to debunk every Ayurvedic doctor, to go in his timeline or to mock him or to quote tweet him or to take a picture, that's a wrong behavior. Psychologically, the person needs help.
You're getting the analogy which I'm trying to give you. Whether a person is giving a fraudulent advice or not, it's not so easy to give in the field of finance. One person's sell price is another person's buy price. Look at FTX. So many of hedge funds, so many of big players, they invested there and they lost money. Beyond a point, nobody knows what is going to happen next, right? Even a series of trade calls can go right in a rare probability. That doesn't mean the guy is genius. Even 10 calls can go wrong. It's very difficult in finance to judge a person. And I gave you an analogy from medicine that debunking someone you think is wrong, okay, is a fair game. But don't go literal, personal, and anal against that person on social media. That's not right behavior. That's my limited point. Yeah, see, obsessive behavior to any extent, right? Even if you are very right, yes, because everything changes, right? For example, even with the health advisory today, there may be need for N95 mask, then it changes to triple ply. Like with change in evidence, like things keep changing. But what I like, even if you speak about probabilities, somebody, like learning from a 1 hour course and making money versus losing money, what has higher probability? Right? People are more likely to lose money learning randomly and taking tips rather than gaining money, right? So the odds are stacked against the user. The same way, if I give a medicine that is more likely to result in harm, I would not give it, right? That is something called ethics. So, see, criticism to some extent is okay. Say obsessive trolling, I don't support like obsessive trolling that they should be trolled or they should be dealt this way. But when something has higher probability of self-destruction, it should be condemned. Any sane human being would condemn. For I mean, example, if I try to break it down, 1 hour course you're talking about, right? Forget about 1 hour course. Sometimes I have come across, 1 or 2 tweets from a person, and seemingly a very normal person having very low follower count. Some insights I might get. Okay, and here in finance, it's not blaming the victim. If someone, I have said it maybe 1,000 times. Can everybody please mute the mic? I have said it 1,000 times. Don't bet the farm on a single idea, right? I've always diversify. So if someone loses more than 1% of the capital, it's not blaming the victim, because that is 101 of the theory, that you have to, start with a very, very small amount. So, yes, and that Anandji, see here you have in a one vast in 1 hour course, nobody tells you, you borrow, you take money from your family and you put everything and you lose. That kind of story people portray, right? Every influencer starts with this, trade very slow. You are likely to make mistake. You're likely to blow up your account. People have made videos how they blew up their account initially. So this idea, nobody is trying to communicate 1 hour course and you'll be profitable. It's like me watching a 1 hour video of car driving and me thinking that I will be a race driver. That is like lack of lot of common sense. See, it is the person who's joining the 1 hour course who is thinking that he can become a profitable trader in 1 hour, and then he will join the course. And then I'm not talking about every case, but in most cases, then reality hits him. Then he gets angry on the fact that he believed on such things, and वो पूरा frustration जो भी paid service कर रहा है ना वो उस पे निकल रहा है. See My only here, wait a minute. Like, see, there are some doctor. illnesses which cannot be treated, right? For example, there are some chronic illnesses, say like schizophrenia or something in psychiatry, which require continuous medicines. If a Swamiji says that, I can cure schizophrenia, come to me. People do go to them. They are called faith healers. And eventually they get worse. So what I am saying is, somebody selling a magical solution for something which there is no cure. Is it right or wrong? Avi, I'll answer, sir. I'll answer that as well. I'll answer. And one more thing. You go to any. One more thing, Anandji. Like, see, you have a vast base of information. Any additional input, additional trade by seeing some positions, you will gain, because you have a vast, reserve of information. Any additional input, you will analyze and use it. But that is not the same with majority of the people. For that, we don't blame the victim, right? If an uneducated person says that, for 5 years I did not read this because I thought that, God has come in human form and it is speaking.
and then he comes to a psychiatrist and he gets treated. We don't blame the victim, right? We don't blame the person that you did not know science, you did not know what is schizophrenia, you did not know what is dopamine, you did not know what is antipsychotic. Sir, So, I'll see, give you we again. have to take a balanced view. I'm Sir, not sir, like, you know, I will give you a parallel again from medicine. If you open any regional newspaper or Hindi newspaper, a lot of people are advising, quacks, they are advising medicine for diabetes. Eat this, you will cure diabetes. A lot of people are advising you eat this medicine and sharab peene ki lat chhoot jayegi. You will be curing your addiction to alcohol. Okay. Now, my thing is all the online doctors, activist doctors, they are not going and targeting that guy who is silently advertising in Dainik Jagran or any Hindi newspaper. They are finding a soft target in a registered Ayurvedic doctor who is trying to, and believe me, I swear on God, I have not taken any Ayurvedic medicine in last 10 years. I am defending the right of propagation of the Ayurvedic guy. Whatever he knows best, he's trying to propagate. If you have a counter argument, put it on your timeline, but beyond that, don't hound or don't try to harass that person, which is happening in medicine field a lot. So I'm trying to answer कि बंदा qualified है कि नहीं है, he is giving medicine. There are a lot of big scamsters who are coming in third page or fifth page of any newspaper curing diabetes, curing schizophrenia, मिर्गी के द्वारा कैसे छुड़ाए, ये सब they are doing. All the good doctors, all the big doctors, they are not going and targeting that guy who is big enough. I gave initial example of TV. Nobody is targeting TV, which is giving 500 calls a day by random people. People are finding soft targets on social media and going after their life as if there is no tomorrow. That I'm objecting to. yeah, like so here, then how do we go against TV, for example? How can you or me Similarly, by propagating the case, the SEBI find a prime anchor, 9 o'clock anchor of a prime Hindi channel for insider trading, for front running. He used to take the stock one day before, second day in the morning 9 to 10. He used to front run the stock, and he had like few crores in double digits. I'm forgetting the name. He was barred. He was there. How many of us tried to hound him? How many us tried to make people remember that this is what TV does, this is what TV does, with example, right? None of our celebrated people who are doing retail ka bhala, they did, because even people who are on pawn shop, people who don't know Twitter, they are watching TV, they are taking trades, right? So people are finding soft targets on social media and trying to harass them for fun. There is no now we are on Twitter, right? So in this medium, what is available, we will act against that. For example, sir, TV is available. Those anchors are there. It is available. So yeah, those anchors are available, and they do comment against them. Their calls, I think, when the Bashin gives this thing, like people do, like. I did not see it trending even for a day, sir. It was a big event. In the age of social media, it was probably curbed. It was a big event. SEBI finding a prime time anchor few crore rupees, right? It was a big event. It was not trending on FinTweet. It was not trending on Twitter. There was no screenshots. We take soft targets, sir. We have to accept as a society. We take soft targets. We beat them so hard that some of them commit suicide. Some of them become depressed for life, right? And for no greater good. For as a psychiatrist, that experiment where you put a guy in a room and you ask the guy to torture inmates. Yeah, the Stanford prison experiment. Exactly. So we are taking the pleasure, by taking out the blood from someone we don't know. As a society, this is what we are doing. I think Anandji is talking about Mr. Hemant guy. So first of all, ma'am, please, we are not taking any names. That's the idea, because you can take his name because it is no, in the paper. that's the decorum I have tried to follow. Let's not. And not just the SEBI guys, even that was trending on the Twitter itself. So first of all, I'm in favor of all the people who are exposing all the frauds. Okay, I'm specifically mentioning frauds, not the genuine people. So if they are raising some voice against all these people, so I think we should support these things. Okay, because there are so many wrongdoings. There are people making full of everyone each and every day. So I think we should support this ongoing move as long as they are
doing within the limit. It's not like we are targeting somebody and मेरा मान लीजिए आपसे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसी के थ्रू आपको हैरेस करूं, वो नहीं। पर जो जेन्युइनली स्कैम हो रहा है ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्कैम हो रहा है, और वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लोग ऐसे बड़े बड़े फेक MTM डाल रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में किसी ने हिम्मत करी है बात करने के लिए, तो मुझे लगता है ये कोई गलत बात नहीं है, और हमें उनको सपोर्ट तो करना ही चाहिए, ताकि कम से कम कुछ लोगों को तो हम हेल्प कर ही सकते हैं। हम अगर टीवी पैनलिस्ट इन लोग के अगेंस्ट में नहीं बोल पा रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैम हम क्यों नहीं बोल पा रहे, वही तो मेरा सवाल है ना कि जो जो नहीं, बड़ा एक्टर है अगर उसके कोई वो तो नहीं पहले बोल दिखना रहा चाहिए है, ना। प्लीज सुन लीजिए, अगर कोई नहीं बोल पा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी रॉन्ग डूइंग के अगेंस्ट में बोल ही नहीं पाए, ठीक है। अगर जो गलत है वो गलत है, चाहे वो टीवी में हो रहा हो या ट्विटर, इंस्टा या टेलीग्राम में हो रहा हो, जो गलत है वो गलत फॉर एवरीवेयर। ओके, तो अगर स्पेसिफिकली हम किसी एक को टारगेट कर रहे हैं और किसी पर्सनल एनिमिटी के लिए, मैं कभी भी इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन अगर लोग एज ए होल आकर सबके बारे में बात कर रहे हैं कि ये गलत है, इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो कई सारे मेरे पास DM आते हैं, पढ़ने के बाद मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग कैसे लोगों को बता रहे हैं कि मैंने 1 लाख से 10 लाख बना दिया। आपको भी पता है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जब इस तरह से बार बार लोगों को बताते हैं, देखिए वी ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेडी, इसलिए हम ऐसा नहीं है कि किसी एक लिमिटेड चीज़ों से खुश हो जाते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो हम ट्राई करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप सब्सक्राइब क्यों कि आप गलत, ठीक है ग्रेड है वो गलत है, लेकिन जो ये दिखा रहा है वो भी इक्वली गलत है। वरना तो वैसा हो जाएगा ना भाई, वो आदमी का ये मर्डर तो करेगा ही, आप सर लेके क्यों घूम रहे हो, ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम। सो दिस इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आनंद, या दो तीन पॉइंट अगर मैं चांस अगर आप दें तो। सर 2-3 नहीं, आप 5 पॉइंट बताओ, अब तो आपको 5 ही बताने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कि ट्रॉलिंग गाय, आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग not happy and showing the grief about trolling. See, everybody has chosen to become a public figure. If you become a public figure, trolling is part of it, right? I mean, वो आएगा उसके साथ. Of course, I mean, there's a limit to it. How you keep that out of your system is something that you have to develop. But if you want to become a public figure, trolling होगी. मतलब वो तो आप खाली अपने सोसाइटी के चेयरमैन बन जाइए तो देखिए फिर लोग क्या बोलते हैं आपको, आप तो यहाँ पे 10,000 और 1 लाख लोगों को फॉलो कर रहे हैं आपको. So I think people need to understand, and people who are at a level where they have so many followers, that these things will happen. Yes, there are guidelines in digital in India which says that what is acceptable, what is not acceptable. If it is not acceptable, of course you can follow and go ahead and take the legal recourse, right? So that is the first point. The second point is frauds जो आप बोल रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, fraud exists because there are people who are falling prey to it. मतलब this is very simple. It's a demand and supply problem. अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि मतलब हम किसी को बता देंगे कि वो फ्रॉडस्टर है तो वो फ्रॉड बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. There are enough and more people, and believe me, ये जो फिन ट्वीट वाला जो स्पेस है या इवन जो financials वाला है, it's a very very small number. I run a firm where I face the frauds जो हम ट्राई करते हैं कर्ब करने के लिए. I mean, you would not believe मतलब क्या नंबर है. In India, it is close to 1 lakh crore of digital frauds which are happening on a yearly basis. And लोग क्रेडिट कार्ड अपना OTP दे देते हैं. So it's a genuine problem which is happening across on a digital medium. People are getting used to digital medium new. And greed, मतलब greed तो हमेशा से ही रहा है ना, तो मतलब लोग will fall prey to it. Can it be stopped? I don't think it can be stopped. I mean, it has been going on forever. Can it be reduced? Maybe. I mean, can activism reduce it? I don't know. They will find a new medium. But like I said, I mean, frauds will happen because there are people who are willing to fall prey to it. सर आपसे मैं एक सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ये एक्टिविज्म है, the true objective of this activism is to do retail का भला and eliminate this fraud, or is it plain and simple jealousy and trying to pull people who are successful in the field you are trying to compete? यार देखिए, ये रिटेल का भला वाला तो सबसे बड़ा फ्रॉड है. ठीक है, कोई रिटेल का कोई भला वाला नहीं चाहता है. एवरीबडी हैज एन अल्टीरियर मोटिव टू इट. नाउ वेदर
it is to create your own followers, you want to become your own influencer, or whether you are trying to bring somebody else down. They're saying, right, your success depends on failure of others. So people, सर एक्चुअली सोशल मीडिया में ऐसा है नहीं. I have never, I mean, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, but as a strategy, I have never taken पंगा with anyone, and मेरा growth कहीं नहीं रुका. I have never taken participation in any controversy. मेरा growth नहीं रुका. तो ये myth है ये. आनंद जी, exceptions होते हैं, rules नहीं है. Exceptions होते हैं, मतलब there are some fat tails, but I think across the, I mean, how will you grow? I mean, growing in social media in this space itself is so difficult. You will, so अभी कुछ लोग बोलेंगे ठीक है कि भाई किसी का पकड़ा गया, उसने 1000 का क्वांटिटी डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, जो भी है. I mean, I can tell you कि उसके followers कुछ टाइम के बाद बढ़ जाएंगे. So people will start following it. Any fame is a fame. We are living in a era where 5-second fame works. ठीक है, I get your point. Yeah. You want to add something more? No, I think I'm good. Thanks. Yeah, Dr. Leo, you want to say something? Good evening, sir. सर आप सर मत बोलो, आप तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो. मेरे 2 छोटे बच्चे, कभी भी आपको फोन कर सकते हो रात को 2 बजे कि पैरासीटामोल 10 ml देनी है कि 12 ml देनी है. वो टाइम पे तो इट विल बी क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर मी, राइट? बिल्कुल, एनी टाइम सर. बोलो सर. Sir, let me come to a point straightforward, as both of us are running short of time. So, एक तो the popularity of MTM verification is because of its objectivity, है ना? We as a retailer, I'm just a new person in the trading for the last 6 months. तो एक objectivity तो आई है MTM verification से, है ना? हेलो? नहीं सर, आप मुझे पूछ रहे हो? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. हाँ, तो मैं इसका आंसर मैंने किया, आपने लेट ज्वाइन किया. सर मेरा मानना है कि इन आवर सोसाइटी, इन आवर लाइफ, बीइंग अ डॉक्टर यू विल अंडरस्टैंड, nobody does anything free of cost and selflessly. I'm questioning that motive itself. The guy or the firm or the organization or the character certificate dene wala people, they have a higher order objective, which might not have unfolded, which might be difficult to understand. In this age and world, data is the new oil. What kind of data people are willing to share just to prove that they are genuine, that is like beyond surprising to me. You have to share your Twitter credentials, you have to share your broker credentials, okay, to get that genuine certificate. I think yes, genuineness has to be proven, but by a third party who himself is might not be trustworthy by each and every person. And then there are many now, abhi to 4-5 aa gaye jo certify karne ko ready hai, right? So this entire method, is it the, so abhi kaisa ho gaya, the cancel culture is कि अगर मैं अपना वेरीफाई नहीं कराऊंगा तो आई एम स्ट्रेट फ्रॉड. So that approach is going in a wrong direction. Yes sir, certainly. The nuance is that. हाँ. सर वो बात तो ठीक है, बट फर्क पड़ रहा है क्या आनंद? किसी आनंद भाई, आप, मैं एक चीज अगर बोलने दो मुझे 2 मिनट. मैं एक चीज आप ऑब्जर्व करो आपकी सराउंडिंग के अंदर. आई हैव ऑब्जर्व्ड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टीवी तो मैंने देखता नहीं हूँ, तो वहां एंकर क्या करते हैं मुझे नहीं पता है. यूट्यूब में भी नहीं देखता हूं मैं ट्रेडिंग रिलेटेड. लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स कम हो गए हैं, और जो 50 लाख के डालता था वो 5 लाख के डालने लग गया. कुछ तो चेंज हुआ है, आई फील. आई मीन, और ये उन्हीं लोगों के लिए है, अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं से सीख करते हैं ना, मतलब जो एक्चुअली कुछ सर्विसेज सेल कर रहे हैं पब्लिकली, ठीक है. एंड द इंटायर पर्पस ऑफ देम शोइंग स्क्रीनशॉट्स ऑन अ डेली बेसिस. लॉजिकल भाई, मैं ये बताऊं कि मैंने भी सुनो तो सही भाई, 2 मिनट तो सुनो तो सही. मैं कुछ भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज 3-3.5 साल से चल रही थी, एंड वी ऑल समवेयर वी ऑल कुड सेंस समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, ठीक है. अब 3-3.5 साल बाद अगर एक सी ऑफ इवेंट्स हैव कम जहां पे दिस इज ट्रेंडिंग मोर देन द अदर, it is flushing out people. It's okay for the system, it might go away in future, but ठीक है, मतलब as long as you are not abusing somebody and you are asking the right questions, I feel it's a good practice that everybody who's selling something publicly, before joining their services, you should ask them the right questions. Don't abuse them, don't become personal with them, but you should ask them the questions. And if they are not willing to share it, then if you join, it is your call. After that, you should never complain about them.
It is their अभी मैं call बोलूं to So certainly it is. share or not, and it is your call to then हाँ take the सुनो services or not. सुनो पहले स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताते हैं. पहला चीज तो ये पता, आई डोंट नो, सो मेनी पीपल आर लिसनिंग, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी कंफर्टेबल इन हिंदी, but when I am like agitated I speak in Hindi. First point, MTM screenshots have gotten reduced. I have not published my MTM for last 7-8 days, okay, and I can tell you, if I publish now I will be trolled. नहीं Whether I am, listen, let me complete now. नहीं वो चीज अलग है आनंद भाई. अरे बाबा सुनो ना, 2 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा. बट आप कुछ सेल नहीं कर रहे हो. दिस इज माय पॉइंट. अरे यार फेसबुक, See, my point is very different, Anand bhai. You are not selling anything on Twitter, right? Currently, आप कोई services, training, coaching, ये सब तो आप नहीं कर रहे हो यहाँ पे. मतलब थोड़ा सा अलग आप डाइवर्ट हो रहे हो. मैं बोल रहा हूँ कि जो सालों से हर मंथ बैचेस चल रहे हैं, जिनके चैनल चल रहे हैं, बात सिर्फ मैं उनकी कर रहा हूँ. आई माइट नॉट नो द होल कॉन्टेक्स्ट 2 घंटे से क्या हो रहा है, सिर्फ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ. अरे भैया मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनो ना, अभी सारा क्लियर हो जाएगा. सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा लगेगा भी नहीं, ठीक है. तो लॉट अगर तुम्हें लगता है कि मैं जेन्युइन हूँ, ठीक है, लॉट ऑफ जेन्युइन ट्रेडर्स माइट नॉट बी पब्लिशिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट वेरीफाइड. ओके, व्हाई दे डोंट वांट टू गेट वेरीफाइड? बिकॉज I would never share my Twitter credentials with a third party. Probably I will never share my broker credentials with a third party. Unless I'm in dire need, I'm not in dire need of any character certification from a third party. Okay, that's one. Second is, जो लोग फेक करते थे वो नहीं करेंगे, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल माइट बी जिनके फॉलोअर्स कम थे, 12 फॉलोअर 50 फॉलोअर थे, जो लोग फेक PNL लेट से डालते थे, उन्होंने बंद कर दिया होगा. There are so many things which have happened right now. एक तो वो सेबी के 2 ऑर्डर आ गए एक साथ, और उसके बाद टीवी पे भी बहुत हल्ला हो गया, ठीक है. एवरीबडी वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज और हर टेल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. इट माइट बी इफेक्ट ऑफ दैट. सो वी आर कंफ्यूजिंग द कॉजेशन एंड कोरिलेशन. ओके, पहली चीज. दूसरी चीज और तीसरी चीज कि अगर समझो कि मैं फ्रॉडस्टर हूं, लेट्स से कि आनंदेबल ठरकेबल इज अ फ्रॉडस्टर हु वांट्स टू सेल हिज सर्विसेज बिग टाइम. आपको लगता है कि किसी एक बंदे के कहने से या एक बंदे के मुहिम चलाने से मैं अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस छोड़ दूंगा और मैं माला पहन के मैं वो करूँ? आई विल मूव टू ट्विटर, आई विल मूव टू यूट्यूब, आई विल मूव टू सम अदर कंट्री, आई विल स्टार्ट यूजिंग अ VPN. भैया ये फ्रॉड नहीं रुकने वाला. यू वांट टू हैव अ बेट? हम लोग अगले साल दिसंबर में यही पॉडकास्ट फिर से कर लेंगे कि MTM फेक वाले, मैं फेक वाले बोल रहा हूँ, जिसमें हमें और तुम्हें दिख रहा है कि वो गलत है, वो तो नहीं रुकने वाला है. दिस इज माई गारंटी टू यू. इतना मैं सोशल मीडिया को समझता हूँ, जिसका ब्रेड और बटर उस पर चलता है. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट ट्रेडिंग, दे आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. उनके बच्चे की स्कूल फीस कहाँ से आएगी, उनके मकान का रेंट कहाँ से आएगा, उनको इधर ही से कहीं से निकालना है. दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. They have to put money on the table for the family. They will find a way. अभी भी YouTube पे बहुत से स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, वो वेरीफाइड नहीं है, आराम से वो पब्लिश हो रहे हैं, आराम. अरे कितना वो ये बुल वगैरह और वो सब ब्लूमिंग में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट पीपल डोंट गेट द कॉन्टेक्स्ट. वो दुबई में बैठ के प्रसारित कर रहे हैं, आ रहा है सब, और उनका काउंटर भी आ रहा है कि ये फेक है, और उसके बाद भी उसी वीडियो पे ज्यादा व्यू है, और जो मैंने वीडियो बनाया और ये जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ इस पे भी उतना व्यू नहीं होगा, राइट. तो वो नहीं रुकने वाला. तीसरा, अभी कमिंग बैक टू coming back to the last point, कि जरूरी नहीं कि किसका क्या एजेंडा है वो फर्स्ट गो में पता चल जाए. पहले तो फेसबुक जब लॉन्च हुआ था तो इट वाज अ कॉलेज ओनली वेबसाइट एंड इट डिड नॉट हैव एड फॉर मेनी ईयर्स. So how Sensible is going to monetize, whether it is going to sell your data, whether it is going to sell your personal information, whether it is going to inject few of its own traders, जिनको यहाँ ये रियल है. जब मुझे मिल जाएगा ना कि मैं ही सबको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि कौन रेपिस्ट है और कौन भला आदमी है, तो मैं अपने लोगों को भी करूंगा ना. सारे पॉलिटिशियंस ने किया है, राइट. सो इट्स अ बिग पावर बीइंग गिवन टू देम. ये कैसे अनफोल्ड होगा, वो कैसे पैसा बनाएंगे, वो अलग, वो सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो सेकंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, right. So let's, you and me at least who have been in social media for so long, let's not be very naive in assuming कि उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है. या बोलो अभी. यस सर, इसमें बस एक चीज पूछनी है मैंने कि ओके, व्हाटएवर यू से इट्स एब्सोल्युटली राइट, बट अगर किसी ने ऑब्जेक्टिवली, मेरे जैसे न्यू रिटेलर ने किसी को फॉलो करना हो, व्हाट क्राइटेरिया शुड आई अडॉप्ट टू फॉलो समवन सो दैट आई कैन, इट विल बी बेनिफिशियल. कौन पूछ रहा है ये? कौन पूछ रहा है? डॉक लियो बोल रहा हूं सर. डॉक लियो, ये प्रॉब्लम 3-4 साल पहले मेरी थी, और आई वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉलोअर ऑफ लॉजिकल ट्रेडर. ओके, जब लॉजिकल ट्रेडर के 1000 फॉलोअर भी नहीं थे,
Okay, and I didn't want to give an example, but it is a good example, so I'm giving. Logical Trader used to publish his screenshot every day or every week or something like that. Okay, big screenshots at that point of time. और मैं और भी बहुत लोगों को फॉलो किया जिनके फेक स्क्रीनशॉट थे. ट्रेडिंग इज अ वेरी स्मार्ट गेम सर. ये एक डम लोगों का गेम है ही नहीं. इसमें अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा स्क्रीनशॉट फेक है, कौन सा स्क्रीनशॉट रियल है, तो मतलब ये बहुत ही एबीसीडी वाला प्रॉब्लम है. इट्स अ वेरी स्मार्ट गेम सर. आप कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी, कैंडलस्टिक कहां जाएगा, ये सब तो सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है. कौन सा बंदा फेक है ट्विटर पे, कौन सा स्क्रीनशॉट फेक है कि नहीं, तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो मैं बताता हूं. मैंने क्वाड को मुझे मिला, मैं लॉजिकल ट्रेडर को मिला, मैं पवन अरोड़ा को मिला. आई डिडंट वांट टू टेक ऑल दीस नेम्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. आई यूज्ड टू फॉलो लॉट ऑफ सुंदर जेबीस. मैंने सबका ट्रेड को डिकोड किया सर. अभी चाहिए तो मैं अभी बता सकता हूँ पब्लिक फोरम पे कि उस टाइम एटलीस्ट कौन क्या ट्रेड डालता था, कौन सा मॉर्निंग ओआरबी डालता था. मतलब अगर मैं देखता था कि, और ये सारे एमटीएम जो होते थे विदाउट एनी क्वांटिटी होते थे, विदाउट एनी डायरेक्शन होते थे. मैं देखता था अगर ये बंदा आज पैसा बनाया, कल लूज किया और नेक्स्ट 2 दिन पैसा बनाया, मैं देखता था मार्केट ट्रेंडिंग है कि रिवर्सल वाला है. सो उससे पता लगा ये बंदा ट्रेंड फॉलोइंग वाला है. क्वाड को जैसे फॉलो किया तो मुझे पता लगा कि ये बंदा ओआरबी करता है, स्टॉक्स में करता है. और मैंने कभी बात नहीं करी इन लोगों से. You can ask logical. So you need, ये तो पहला ऑर्डर है स्मार्टनेस का. You should know who are the genuine people on social media, and no third party can give you a certificate like that. खुद जब आप फॉलो करते, एक बंदा जो रोज प्रॉफिट डाल रहा है, रोज एवरी डे, क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या थर्सडे, क्या फ्राइडे, मतलब महीने के होते हैं ऐसे लोग भी होते होंगे, ठीक है. बट एटलीस्ट मैंने उनको फिल्टर आउट कर दिया, बिकॉज मेरा बिलीव डे वन से था कि नोबडी कैन मेक मनी ट्रेडिंग एवरी डे. आनंद भाई एक छोटा सा बस एग्जांपल दूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा. मैं एक जने को जानता हूं जो रोज प्रॉफिट बनाया, पिछले 1 साल में कभी एक भी नेगेटिव डे नहीं हुआ. उनकी तो मैंने और तुमने डिस्कस किया ना कि वो बंदा फ्रॉड है, राइट? अरे सुनो तो सही, उनकी वर्कशॉप है, उसमें लोग जाते हैं और सडनली उनके स्क्रीनशॉट आना बंद हो चुके हैं 7-8 दिन से. तो कुछ तो इसका इम्पैक्ट है. यार सेबी से लोग डरते हैं. 3 महीने बाद देख लेना, हम लोग बात करेंगे फिर 3 महीने बाद ये परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं. नहीं, सेबी के ऑर्डर से पहले जब वो पब्लिक में नहीं आया था, तब भी क्योंकि लोग वो जो भी स्क्रीनशॉट डाला तो नीचे बोला वेरीफाई करो, तो डेफिनेटली उसने नहीं पोस्ट किया. बस मैं इतना बता रहा हूँ आपको. फर्क नहीं पड़ता है सर किसी को उसमें. बट सर मैंने भी तो पोस्ट करना बंद कर दिया, राइट? Might be some other reason, right? Yeah. All I'm saying, we have to be at a retail level. We have to be smart enough to know who are the genuine traders. और कोई बता नहीं सकता है, आनंदेबल हो या प्रवीण हो, कोई किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकता है. आप उसके ट्वीट देखो, आप उसके 1 साल पुराने ट्वीट देखो, 6 महीने पुराने ट्वीट देखो, मार्च 2020 के ट्वीट देखो, अगर वो पहले से है ट्विटर पे, देखो कि उस बंदे की क्या ट्रेडिंग फिलोसफी है, वो एमटीएम कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो जो प्रीच कर रहा है वो खुद कर रहा है कि नहीं कर रहा है. समझ में आ जाता है यार. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू नो. देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा आयनिकल चीज ये है कि वी आर ऑल फ्रॉम अ फील्ड वेयर वी डोंट नो वेदर आवर सक्सेस इज बिकॉज ऑफ स्किल और चांस. एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रॉड्स क्या है. So nobody knows. I mean, in the market, how much is skill, how much is chance, how can anybody quantify? We are all taking a trade based on probability, right? Yeah, I get it. Anyone wants to add anything more? Yes, sir. I think it is a high time when SEBI should step in and they should give license for trading. कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ सर. सर ये तो मतलब अगर आप कोई भी इंडस्ट्री को किल करना चाहते हो ना, तो आप लाइसेंस देना चालू कर दो. अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अगर किल करना चाहते हो, सिंपल एक लाइसेंस इश्यू कर दो कि आप बिना एक हाई फाई लाइसेंस के, आप अभी वो अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हो रहा है, अगर आप दवाई का इंपोर्ट करना चाहते हो. इट्स नॉट अबाउट दैट लाइसेंस. आई एम जस्ट सेइंग, हम एमबीबीएस करते हैं तो उसके बाद लाइसेंस इट्स अ फॉर्मेलिटी फॉर अस टू गेट इट. उसके लिए हमें कुछ हार्ड मतलब वो नहीं करना पड़ता. सो ट्रेनिंग के लिए एक लाइसेंस तो होना चाहिए. इज इट मतलब डू यू एग्री विद दिस और नॉट? सर मैं आपको ये इसका बस एक चीज बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले कोई ट्विटर नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, और मैं किसी को भी पूछता था तो नोबडी यूज्ड टू एंटरटेन इवन फॉर 5 मिनट्स कि कुछ बता दो. नहीं बताता कोई सर. आज भी मैं जिन लोगों से टच में हूँ, अगर मैं कुछ पूछता हूँ, कोई नहीं बताता. बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के कोई नहीं बताता. ये पूरा जो ये सब जो चक्र लोग बोले रोक दो, एक दिन रुक भी जाएगा शायद, इंशाल्लाह. और इट विल बी डिजास्टरस फॉर द कम्युनिटी. आई एम टेलिंग यू. It is the job of the individual to find out what is relevant for him, what is not relevant for him. और जब आप रेगुलेट करोगे, और खासकर हमारा जो रेगुलेटर, आप इंश्योरेंस में देख लो, इंश्योरेंस इज हेवीली रेगुलेटेड, राइट? आप अपना पीएमएस में देख लो,
पीएमएस में सर ये बोला हुआ है सेबी ने कि आप सेबी की वेबसाइट पे अपने रिजल्ट्स अपलोड करो. Not more than 30% of the PMS guys are uploading it. It is optional right now. They're not uploading it. अभी आप आज आपको अगर पीएमएस का लाइसेंस चाहिए तो 2 करोड़ की नेटवर्क चाहिए, नहीं अभी शायद बढ़ा दिया है, और 50 लाख का मिनिमम डील टिकट साइज. ऑल दीज आर जो बंदा जेन्युइन जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है विथ लो कैपिटल, उसको स्नोबॉल करके कुछ बड़ा करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा. तो किसी भी इंडस्ट्री को किल करना है कंपटीशन से, तो आप लाइसेंस शुरू कर दो. आप देखो अभी पेट्रोलियम में पेट्रोल पंप चाहिए तो लाइसेंस चाहिए. इट डजंट हेल्प एनीबॉडी सर एक्सेप्ट द बिग गाइज. Okay, so thank you very much. Yeah. Are there more speakers? I gave rights to buy the dip. Manoj. Or shall we call it a day? No, Anand, just one point I want to add as an analogy. A lot of the people यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई कोई क्लास चला रहा है, कोई ये चला रहा है. मैं बोलूँगा यार एक्चुअल क्लास जाके देखिए ना आप, जो ट्यूटोरियल्स चलते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहां वो क्या कर रहे हैं? वहां पे भी तो वही दिखा रहे हैं ना कि IITZ में ये फर्स्ट 5 रैंक्स वाले हमारे इंस्टीट्यूट से हैं. आप तो अपने बच्चे भेज रहे हैं ना वहां पे. क्या आपको लगता है कि जेन्युइनली आपका बच्चा फर्स्ट 5 IITZ में आ जाएगा? So I'm just asking whether how is this any different? I mean, from an education perspective, how is this any different from what is happening? और बीच में जैसे मैं तो जेई के लिए पढ़ाता था, तो बीच में बहुत बात चली थी ईयर 2005, 6, 7, 8 वगैरह के आसपास कि सारी कोचिंग्स को बंद करो और स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, और कोचिंग्स को बैन करो, और या तो हेविली लाइसेंस करो. ये उस टाइम का बात है, बीच में ये 2014 के इलेक्शन के पहले की बात है. काफी जगह पे बात हुई थी, और इसमें पूरी कंट्री डिवाइडेड थी. एटलीस्ट जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, या जो लोग तैयारी कर रहे थे, या जो टीचर थे. मैं टीचर था तो आई वाज आल्सो अफेक्टेड. और मैं आपको बताऊं कि मैं कोचिंग में पढ़ा भी हूँ, और मैंने कंपटीशन भी निकाला, और उसके बाद मैंने कोचिंग में पढ़ाया भी. कोचिंग एड्रेसेस अ नीड, और उसमें भी अगर आप कोई भी 100 कोचिंग इंडिया के पकड़ोगे तो उसमें से 80 कोचिंग प्लेन एंड सिंपल फ्रॉड है. फ्रॉड इन द सेंस कि वही मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं, टीचर्स अंडर क्वालिफाइड हैं, अंडर पेड हैं, और उसके बाद वो जो कमिट करते हैं वो पूरा नहीं करते, और जो रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं वो फेक होते हैं. आज अगर आईआईटी में कोई बंदा नंबर 1 रैंक आता है, उसको उसके साथ हर कोई फोटो खिंचाता है. फिर जे भी खिंचाएगा, आकाश भी खिंचाएगा, तो फ्रॉड है ना. गलत एमटीएम स्क्रीनशॉट डाल रहे कोचिंग वाले. राइट, एग्जैक्टली राइट. फिर भी पेरेंट्स को भी पता होता है, पेरेंट्स फिर भी जाते हैं. पेरेंट्स लोन लेके जाते हैं, पूरी गाड़ी कमाई लगा देते हैं. जितने में एक बच्चा मतलब अच्छा सा पोस्ट ग्रेजुएशन करते, उतना तो कोचिंग स्टेज पे ही खर्च कर देते हैं, बच्चे को पढ़ना नहीं आता. दिस इज अ डार्क रियलिटी. राइट. बट अगर आपने स्कूल्स को तो रेगुलेट किया हुआ है ना, स्कूल्स तो वेल रेगुलेटेड है. राइट. क्या हाल है स्कूल का, तो वो हम देख ही रहे हैं. कहीं किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं. अगर बच्चा आज की तारीख में कोचिंग क्या सप्लाई करता है कि आपको थोड़ा फोकस बना देता है. ये किताबें पढ़नी है, मटेरियल पढ़नी है, अभी तुम दूसरे सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, हिंदी है, उन पर उतना ध्यान मत दो, इसको पढ़ो, इसको कम से कम दिन में 6 घंटा पढ़ो. आपका थोड़ा सा फोकस एक 5% का नज आपको देता है. और जो शायद आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में थोड़ा सा गाइडेंस जो मिल जाता है, उसकी बहुत हेवी कॉस्ट लोग पे करते हैं. सही है कि गलत है, आई डोंट नो, बट रेगुलेट करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं. बिकॉज प्रॉब्लम दूसरी है कि स्कूल ठीक से नहीं पढ़ा रहे और आप किल दूसरी चीज को कर रहे हो. तो यहाँ पे मुझे लगता है जो अगर इसको ऐसे छोड़ दिया गया, धीरे धीरे इट विल इवॉल्व टू अ लेवल जो यूएस में हुआ है, जैसे टेस्टी ट्रेड है या और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी जो एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे. आप फिर भी बोल सकते हो टेस्टी ट्रेड जो आधी चीजें बताता है वो सही नहीं है एंड ऑल दैट, बट इट विल कंसोलिडेट टू अ लेवल. जो हॉबी प्लेयर्स है वो निकल जाएंगे, जो फ्रॉड्स हैं वो भी निकल जाएंगे, और बिकॉज पीपल विल बिकम वाइजर एंड इट विल मैच्योर टू अ लेवल. अवेयरनेस बढ़ जाएगा. बेसिकली यस, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स अवेयरनेस. यस, आई एम ऑल फॉर अवेयरनेस. मैंने इसीलिए वो लिवर का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको लगता है कि कोई बंदा दवाई बेच रहा है जो बहुत ही गलत है, आप अपना वीडियो बनाओ, उसको अपनी टाइमलाइन पे डालो. अब जो दूसरा आयुर्वेदिक डॉक्टर है नॉन रिलेटेड टू दैट दवाई, उसको आप दिन रात ट्रोल मत करो एज एलोपैथिक डॉक्टर. एग्जांपल आई गिव. तो आपको लगता है कोई बंदा फेक है तो उसके ऊपर ठीक है, आप एक वीडियो बना दो, उसके बारे में एक बार बता दो, बट उसको दिन रात उसका पता निकाल लेना, उसका पिन कोड निकाल लेना, उसको हैरास करना, वो सब आई थिंक दैट्स लाइक प्योर मेंटल हरासमेंट, फॉर्मिंग अ मॉब एंड ट्राइंग टू किल समवन. Nikhil, you have taken a mic. You want to speak?
Anybody, जब मैं बोलता तो सभी को बोलना था. Anybody wants to speak, please go on. Nikhil, we are waiting for you. I'm just trying to understand कि मतलब the whole, why is the whole issue even generating? कि मतलब like ये क्या चल क्या रहा है? Like even if like I don't understand why do anybody needs to like publicly show their financials कि अपना MTM दिखाना क्यों है? Like, क्यों like कुछ तो incentive everybody does a task because they have a hidden incentive अच्छा behind. तुम ये तो तुम थोड़ा लेट ज्वाइन किया. I'll again answer it. I'm just saying कि कोई भी कुछ करता है ना तो उसका एक hidden incentive होता है उसके पीछे. तो आप हिडन नहीं है, नोन है. He is trying to sell something. हाँ, तो he's trying to sell something. आप इंसेंटिव देखो, आपका इंसेंटिव देखो, मैच करता है नहीं करता है तो मतलब करो. मतलब ये तो मतलब half of the FinTwit is MLM schemes, half of the FinTwit is gang wars. मतलब एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल चल रहा है, वो चल रहा है कि like 2 or 3 4 sides trying to pull each other off. नहीं, it has come to a level where we are trying to cancel people. We are doing targeted harassment. So it has come to that, and that as a society is not good. Four different segments of one community trying to pull each other off. That's it. इसमें सारे गलत है. मेरे से पूछो, सारे गलत है. अपना मतलब it's a trading business ना. business पे ध्यान दो, अपने business पे ध्यान दो. Forget about everything else. बाकी like the whole thing about कि there are people who are scamming people. Yes, there are people who are scamming people. There are people who are trying to openly question people who are scamming people. Yes, there are people who are trying to openly question. Till you're questioning, it's fine. Like when you go aggressive about it, then it's become bad. But it's like वो एक consumer, anybody who consumes a content, उसके justification पे है कि वो क्या मतलब what is he going. मतलब there is no concept of saving the retail. Like what are we talking about when we talk about like saving the retail? Retail ही अपने आप को सेव करने की बात कर रहा है from other retailers who is selling courses. मतलब क्या चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. देखो पहली चीज तो हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं बोला था. आई वाज वेटिंग टू क्लोज इट. अभी तो दूंगा आपको टाइम दूंगा. जस्ट लेट मी आंसर. तो पहला तो ये कि लोग क्यों दिखाते हैं एमटीएम या कुछ भी. अभी गो टू इंस्टाग्राम, पीपल आर शोइंग हाउ ब्यूटीफुल दे आर. पीपल आर शोइंग द फॉरेन वेकेशंस दैट दे हैव टेकन. पीपल आर शोइंग देयर होम्स. इन दिस न्यू एज ऑफ सोशल मीडिया, दिस इज अ वैलिडेशन का मेथड कि मैं दिखाऊंगा तुमसे बेटर कर रहा हूँ, एंड आई गेट सम ट्रैक्शन एंड दैट विल गिव मी अ डोपामाइन. पहला तो ये. दूसरा, आई माइट बी सेलिंग समथिंग विद दैट रीच. अभी आज ही मुझे एक ऑफर आया कि $50 में एक रीट्वीट. So from $50 a retweet से लेके selling a course to selling a PMS to selling some advisory or anything else like people. So that is the second motive, right? अब उसमें कौन सा रियल है कौन सा फेक है, coming from like industry we are familiar with, you are familiar with. Let's say if I talk about skin fairness cream. अभी हमको क्या पता कि वो फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते हैं कि नहीं होते, बट फेयर एंड लवली इज एडवर्टाइजिंग, राइट? The thing is, but when you are selling something, consumer has all the right to ask all the questions that he wants to. Yes. So fair and lovely, I asked a question, they did not reply. I'll never buy fair and lovely again. Beyond that, I'll not go and start pelting stones on their office, right? But you can go and try. You can go and post opinions about it on social media. That not beyond a point. That will be targeted harassment. Fair and lovely will take you to court. I mean, वही मैं कह रहा हूँ ना. It's a case of giving your opinions, or if it's a case of कि आप पूरा like you're going. Yeah, giving your opinion and let it be. That's the thing. I mean, I know it's a very. I understand. I'm saying it's a community. इसको like politics की ऐसे नहीं करना है. The thing is कि यहाँ पे इस पूरे community को politics बना दिया गया है कि मतलब या तो आप चोर हो या आप मतलब वैसे हो कि मतलब हर आदमी कह रहा है कि मैं सही हूँ. ऐसा कोई भी सही नहीं है. Everybody has a hidden incentives behind it. मैं वही समझा रहा हूँ कि everybody has a hidden incentive. So if you are selling something, you are liable to be answerable to all the questions that a consumer has. अभी जैसे मैं बताता हूँ, I know it's a very delicate question and you can decide not to answer, but घुमाना नहीं इस question. What I'm going to ask you. PR Sundar did something grossly wrong, but उससे पहले उसका और verified PNL वाले का लड़ाई चल रहा था. It went to a very ugly level from both sides. Okay, and then he did a self goal in terms of one comment. Okay, अभी उसका पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको स्पॉन्सरशिप हटा दिया, उसका वीडियो टेक डाउन कर दिया, वो सब कर दिया. He is being hurt as a businessman. You are also a businessman. You think it's justified punishment?
That's something You can do I no would no really comments, not but want to don't pretend. comment on. Yeah, it's But good it's good. whenever whatever happens, वो एक see, पब्लिक फिगर है, प्रॉब्लम पब्लिक के प्रॉब्लम कारण क्या ही होता उनके है पास इतने स्पॉन्सर्स वगैरह आ रहा है, और अगर है तो उसके लिए उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि रिस्पॉन्सिबली आंसर करें। अगर वो नहीं कर रहे तो पब्लिक जो दे सकती है, पब्लिक वो ले भी सकती है। सो आई डोंट थिंक इट exactly. इज रॉन्ग। So what happens is it is not about what he said, like it is about what he said, but this मैं वही समझा रहा हूँ कि this is not something, this PR Sundar is not the alone one who says this thing publicly, or like there are a lot of people. अगर आप if you go into the depth of Twitter, there will be probably something like that written every second by thousands of people. It's just that किसके मुंह से कहाँ पे किस टाइम पे आ रहा है, that has a lot of impact. मतलब it's just if you are an influencer who has a bigger size, you have a responsibility कि आप क्या टाइप कर रहे हो, आप उसको 4 बार like proof read करो. Well, you cannot just go and say any random thing when you are an influencer, because a lot of people are following you. When a lot of people are following you, they basically are consuming your content. They are consumers of you. If they don't like it, they have like every right of saying ki, I don't like it, or I don't like anything. So it's just that ki when you have such kind of a following, it becomes a responsibility for you to see what you are saying, where you are saying, how you are saying, and everything else. Again, I'm asking, you think the punishment which is being given to him is proportionate to the crime, or is it mob justice? It's just people. It's just कि देखो, अगर आपके फॉलोअर बड़े होते हैं ना, तो आपके साथ अच्छी चीजों के साथ खराब चीजें भी होती है. इट्स जस्ट ऐसा नहीं होता कि अगर आपके फॉलोअर्स 500 हो गए तो आप गॉडमैन बन गए. ठीक है, आप गॉडमैन तो बन गए, बहुत सारे लोग सर 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 प्लीज 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 कर रहे हैं. यू हैव ऑल दी गुड थिंग्स, मतलब आप सारे अच्छे एप्पल ले लो और रॉटन एप्पल्स ना लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. That's not how the world works. So if you are like that level and you say something like that, you have to like you are kind of inviting like being pelted by stones. I'm just saying कि अगर आप उस लेवल पे हो और आप ऐसी चीजें बोलोगे, you are inviting yourself to be pelted. Nikhil, क्या ये सही है, क्या ये I'm गलत trying है? to say as a society, is stone pelting. Joe Rogan को जैसे cancel किया, a lot of politicians are being cancelled all over the world. A lot of journalists are being cancelled all over the world, but by a small minority, but united hateful mob. That culture is not right. It's not about PR or Joe Rogan or some journalist who is being cancelled right now. वही मैं I'm just saying कि आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि वो कल्चर भी राइट नहीं है. I'm just saying कि दोनों ही गलत हैं. PR Sundar should not be talking about things when like that, when he's an influencer, when he has 500 people like 500,000 people following him, looking forward to him. Okay, might be we don't have like good image of PR Sundar in our head, but there are like a lot of people who treat him like a godman right now. Like there are actually new people who look forward to him. Like तो मतलब दोनों तरफ से मतलब it's not, you just cannot blame कि हाँ you are getting stone pelting. Mob culture is not right. I'm just saying कि you are inviting that mob culture when you're doing something like that. I'm not saying कि mob culture is right. I'm just saying you are inviting that when you are doing that right. मतलब you cannot control, you as an individual cannot control both sides. You can just try कि दोनों तरफ से आप participate ना करो. You don't pelt stones as well when someone is doing something wrong, and you don't like when you are an influencer, don't try to see what you are saying and what kind of influence you are providing to your followers or consumers. आनंद भाई, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते दोनों साइड को. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप दोनों साइड को जस्टिफाई नहीं कर सकते. कोई भी सही नहीं है इसमें. क्या fair enough. But when you are आनंद भाई, अरे यार मुझे भी go ahead. तो every follower has a right to it. Like वो right होता है. मतलब आप एक influencer का जब वो पहनते हो तो you'll have the good things as well, but you'll have the bad things as well. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अच्छा apple मिले. You don't want the rotten apples like when you are growing an apple tree. Hey Anand, I just like to add something here. I joined really late. If I actually miss some conversation, it's okay. But I want to talk about this new issue on one of the financial influencer who had made some bad comments and he got into a lot of problem. I don't want to name him, but let me ask you something. He came to Twitter during around 2017, and when he came, he had less than like 5,000 followers. So what has made him so big now is only his followers and only the Twitter platform. So he has all the responsibility to make sure that he's sending right messages across and he is being a role model to all these people. So only his followers have made him so much wealth, fame, and everything, right? So when the same followers question him, he should be able to be answerable.
It is not wrong. It is definitely not wrong what Twitter has done to PR Sundar or anybody. They have made him famous. They made him financially so wealthy he couldn't even have would have even made through trading. So when the same people have made him so much wealth, why can't he stand in front of them and answer the same questions which they actually put forward to him? It's not mob justice. They did not go to his house and attack him. They had a civil argument where if you see the tweet which PR Sundar made, I read the whole comments, even though he has blocked me and I can't even follow him. I saw the whole comments which led to his abusive comments there. They were all civilized. They were all talking in a civilized manner. When you have that kind of civilized mannerism from his Twitter followers, he has all the responsibility to talk back in the same civilized manner, right? And again, I'm telling this, he has all the rights. The Twitter followers have all the rights to question him. And it is definitely not mob justice. PR Sundar was wrong. Whatever he was done as wrong, he is a repeat offender. We have literally seen, because I've been in Twitter since 2016-17. I've been there. So I have seen a lot of times where people keep on complaining about PR Sundar, about his abusive comments on women or on any other trader. So whatever happened here to him, it was not mob justice. He deserved what happened to him because his own Twitter followers gave him that justice, right? So this is what I wanted to add on this. I disagree on that, and I'll tell you why. Okay, I'll take parallel from my side. Okay, as I said before, you joined and many others joined, that any influencer doesn't owe anything to the followers. Okay, it's futile to accept anything. I mean, I have a decent following now, and I can tell you, behind that is my hard work. Okay, I have following on YouTube. Behind that, I have made 102 videos. Right, it takes a lot of effort, energy, time, money to make those videos. Okay, and to put up a tweet. Let me complete. And to make a thread. And anybody who does that, anybody will have followers. It's not about me, you, PR Sundar, or anybody. Okay, there are other ways of getting followers, and it's the algorithm which makes people notice you, which makes people follow you, and then eventually, once you have the follower, you have the distribution, you sell something, you get the money. It's the business. You don't owe anything. Just like these actors don't owe anything to the wider audience. They are doing a job, then ultimately that job is being sold in the market in the name of the movie or sponsorship deal or whatever they make a comment. So let me complete. Let me just one more minute. No, I just want to interrupt here. So you are saying that whatever he has done is right. Then whatever promotion he has, I will come to that. I'll come to that. If you want to industry is all right. That's what you are trying. Now that you have raised it, I'll come to that as well. Normally, I don't speak on these topics, but now that you have raised, but let me finish. Okay. So first of all, we none of the influencers who are having more than 10,000 followers would understand. None of us owe anything to the followers. I'm really sorry. I disagree. Let me complete. That is completely wrong. No. You can't. I might be wrong, but let me finish. Do not owe to their followers. That's completely wrong assumption. You will not allow me to finish. There are a lot of traders who are actually. You said. I know. You said it. Everybody heard it. Let me complete my part. Right. So I believe I own nothing to anybody, right? Initially, I used to answer to everybody, whoever asked, what is your capital, how much you trade, what is your strategy. But when, as and when you grow, it becomes difficult to answer to everyone. Okay, I stopped answering to people in DM. No. I don't know. I'm saying you're not even. It cannot work like this. No. Anand, you have to allow me to complete. Yeah, come on. No. I have not even made one point. I have 3 points to make. Remove करो ना यार उसको. Okay, so the second thing is that so as you gain influence, what happens is the people who are positive to you, whatever, maybe I'm a fraudster, people who believe in me, their comments become less and less, and hateful comments, distasteful comments become more and more. I try very hard not to respond to them. But PR Sundar has built his entire game on giving it back to the trollers. Even this sensible guy, he started as a troller. Okay, he's a big time troller. He trolled PR Sundar for no end. So that is my second point. That there was a background story to it. Now coming to the third point of Delta Exchange. Okay, I have never endorsed anything, but a lot of people have endorsed a lot of exchanges, including celebrities, including FTX, which went down. In hindsight, it looks very easy.
that this guy would have known that this is a Ponzi scheme or this is a scam. When you are doing it, let's say I do some sponsorship deal today. Let's say I advertise for a new hospital which is being built in Delhi, and I say, this XYZ hospital is very good, and then there's some scam happens in the hospital. Should I be held accountable? I know a lot of people hate PR Sundar. Okay, there is a background story for every hateful person, but endorsing something at that point of time, if you don't know it is a fraud, later on it turns out to be fraud, no, you cannot be held accountable for that. That's the simple answer. Yeah, go. All right, Anand. What I was trying to say was, not everybody owes something to their followers. You are saying that nobody owes anything to their followers. No, it's not right actually. Those who sell subscriptions, membership, those who are doing paid promotions, getting money from the Twitter followers, they owe a lot of things to them because they only made them a lot of money, so they owe a lot of things back to their followers. You can't say that nobody owes anything to their followers. No, see, I don't owe anything to my followers because I am not into any of this subscription service or anything. If I post something wrong, then I have to be answerable. Okay, that is a different part. What you are trying to say. I'm saying, talking about people who are into this services business, who are actually selling something. They owe a lot of things to their followers. They have to be responsible. They have to be answerable. Whatever happened with many of the financial influence, because they are not able to answer a lot of things which put forward. I have already seen a lot of things happening in Twitter for the last 2 weeks. They're actually not ready to even share whether they're profitable trader. That is one thing. They do not want to talk about their profits when some people have given money to them for their subscription. They're not even ready to own up their own losses in Twitter platform. They don't want to do that. So those people have to actually do that. They have to actually verify themselves. Get your point. Listen. And second thing, and second thing, you talked about Sensible. I think Sensible has developed a wonderful platform. I'm all for it because this is the only way, in a civilized way, they can actually bring a platform where a lot of traders who want to promote their services, they can get them verified. This is a really good platform. There's nothing wrong on it. Whatever you talked about Abid being a troller. No, he was not trolling. Right? He was just asking people to verify. That's all. If you're not ready to verify, okay, don't verify. Hey, Baba, when he had less than 10,000 followers, since that time I'm saying, but I didn't want to discuss any people. Now, coming back to your 2 points, if I have taken money from somebody, or if any XYZ has taken money from, definitely that person is answerable, and answerable one-to-one. But unfortunately, on social media, people who troll you, people who ask questions, people who abuse you, they have never paid any money. They don't even follow you. See, nobody is doing one-to-one, right? When you're doing a YouTube video promoting some platform or promoting anything, you are actually letting millions of people to watch that video. So you're not answerable one-to-one. You have to be answerable to everyone. So you become answerable one-to-one to everyone. What you're saying is, you don't owe anything to your followers. No, that is wrong, Anand. You have to owe a lot of things. You have to be answerable. A lot of influences are wrong. We might agree to disagree, right? Like you made your point, I made my point, right? Can we move on? Yes. भाई कुछ बोलना है हमें. बोलो. बहुत अच्छा किया आपने स्पेस बनाया, क्योंकि वन साइड ऑफ द स्टोरी सबको मिल रहा था. पहले भी कुछ चीज बुरा हो रहा था और अभी भी कुछ चीज बुरा होगा. तो आपने मस्त पॉइंट उठाया. एक तो पहला मेरा दिमाग में आया, भाई हम छोटे मोटे लोग हैं ना, आप अपना दोस्त हो, इसलिए बड़े बड़े लोगों के बीच में मौका दिया. एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बोला कि भाई ये पासवर्ड शेयर हो सकता है अपना ट्रेडिंग आईडी का और ट्विटर का. अभी ये तो चेक करना पड़ेगा. मैं खुद ही डाल रहा हूँ वेरीफाइड सेंसिबल, लेकिन अभी मुझे भी वो एक पॉइंट है कि हमारा सिक्योरिटी कंपनी. आपने वेरीफाइड डाला है तो आपने अपना ट्विटर का एक्सेस राइट्स दिया है. भाई उधर लिखता है शेयर विद ट्विटर. मैं खुद आईटी में हूँ, लेकिन उस टाइम पे वो क्लिक नहीं किया कि वो हम इनडायरेक्टली दे ही रहे ना. तो इनडायरेक्टली नहीं सर, दे ही रहे. That is what the fact is. I am a fully pattern. I am not giving. So that is one point that I have to take. Okay, that is point number one. And the other point is there should not be only one platform in this world to justify, right? अभी मान लीजिए मुझे आप पसंद नहीं हो and you are having a platform to give some something. मुझे बोला ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, I want to go to some competitor, so that is also fine, है ना. अभी पहला वाला बात करता हूँ. अगर पहले कोई अपना सर्विस इस बेसिस पे बेच रहा था कि उसको प्रॉफिट हो रहा था और प्रॉफिट दिखा रहा था, तो उसको वेरीफाई करना है. लेकिन इससे पहले कोई अपना सर्विस बेच रहा था, नहीं बेच रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज और हर नॉलेज, देन उसको कोई जस्टिफाई करने का जरूरत ही नहीं है. इससे पहले भी वो शेयर नहीं करते थे,
इसके बाद भी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं, जो पहले भी शेयर नहीं करते थे, अभी शेयर करो वो भी गलत है। लेकिन ये तो गलत होगा ही, लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना है। फूल और कांटे साथ में मिलेंगे भाई। अगर करोड़ों छापे हैं लोगों से तो लोगों का सुनना भी पड़ेगा। लेकिन मेरा मेन पॉइंट ये है कि इज इट सम क्लेम ये लीगल है या इलीगल है, कौन डिसाइड करेगा? अभी एक कंट्री है, वहां पे कोई आता है बोलता है कि 15 लाख दूंगा या फिर मैं बैंक से लेके आऊंगा तो सबको 15 लाख मिलेगा, लोगों ने वोट दे दिया। कोई स्टेट में अरे गौरव जी बहुत हो गया, अभी बंद ही करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक इट इज गोइंग बियॉन्ड माय हैंड, पीपल आर गेटिंग रियली पैशनेट। नहीं, आई नेवर डिस्कस एनीथिंग पॉलिटिकल, ये भी मैं डिस्कस नहीं करता, बट इट हैज कम टू सच अ टारगेटेड हरासमेंट, पीपल आर टारगेटिंग एनीवन एंड एवरीवन, फॉर्मिंग अ मॉब, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेशन का एक ही मेथड रह गया है, व्हिच आई थिंक इज वी आर गोइंग इन अ वेरी वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। भाई अच्छा सा पॉइंट बोलेगा, सबके लिए अच्छा है। गांव में होता था कि एक फील्ड था जहां क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, किसी को मिलता नहीं था फील्ड खेलने के लिए, तो चाचा जी को बोल के वो फील्ड में पेड़ लगा दिया। अभी खेलने के लिए किसी के पास फील्ड नहीं है। अभी इंडिया का फिनट्वीट ना वो किंडरगार्टन में है। यूएस में क्या होता है, वो लोग दूसरे को प्रमोट करते हैं, उसके यूट्यूब पे जाते हैं, वो इसके आता है, दुनिया भरा खिला रहता है, सब खाते हैं सब पीते हैं। अभी इधर क्या हो रहा है ना, मुझे वो पसंद नहीं है तो इसके आड़ में मैं उसके पीछे लग जाऊंगा, वो पसंद है तो इसके पीछे उसको ये करूंगा। अरे भाई टॉपिक पे रहना चाहिए, है ना? तो वो है, जैसे आप YouTube पे देखो ना, अभी अपना संदीप माहेश्वरी का, ही इज ब्रिंगिंग ऑल द इन्फ्लुएंसर टू हिज प्लेटफॉर्म। सर अभी इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि वी ऑल गॉट डिरेल्ड फ्रॉम द मेन टॉपिक। खैर एनी विच वेज, एनीबॉडी कोई बात बोला, मुझे बोलना था, नहीं, anybody has any more closing remark? I'll finish in 5 minutes. I am done whatever I wanted to say. Okay, thank you so much for your time, and I am not for or against anybody, and जो हो रहा है ultimately I am more interested in कि game कैसे unfold होगा. All I can say is nobody has honest noble intention, and as I said कि दूध का धुला तो कोई नहीं है, किसका क्या game है, let's see. Thank you so much for your time.